Thank you so much. Okay, we have another speaker today who's also a startup innovator who established himself in Ladakh. So I request Mr. Lobsang Wangtak. So Lobsang Wangtak is a co-founder of Navikarna Trust, working on solar-powered lift irrigation and drinking water to parched fields in Zanskar Valley. He also founded Zanskar Conservancy movement to sensitize and mobilize inhabitants of Zanskar to adopt sustainable policy to protect its glacier. So we have Labzan Wangtak, who actually works on ground in Ladakh for sustainability of the region. I invite Mr. Labzan Wangtak to share his and talk with us. Mr. Labzan. Yeah, hello. Am I audible? Yes, you are audible. Okay. Can you Julie, please switch on your camera so that we can see you? okay. Okay, yes. I'm a shy guy, that's why. Julie, namaskar. Julie. I'm Lobsang Wangtak hai, and 2019 में मैं और 3 और साथी जो हमारे फ्रेंड्स हैं, सुशांत जो हिमाचल से है, निशित जो हैदराबाद से है, और कुंगा जो स्पीति से, हम तीनों ने ये सोचा कि पानी का जो प्रॉब्लम लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में है उसको हम टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके पहले मुझे एक कॉन्टेक्स्ट सेट करना पड़ेगा, जैसे जो होल इकोसिस्टम लद्दाख में कैसे इकोसिस्टम होते हैं, और वो प्रीडोमिनेंटली इंटायरली डिपेंडेंट ऑन ग्लेशियर्स है। तो उसमें मेरा एक डायरेक्ट रिलेशन है पानी की वजह से, क्योंकि मैं एक गांव से आता हूँ, स्टोंगदर विलेज, जो ज़ांस्कर में है। तो काफ़ी 10-15 सालों से हमें वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम हो रहा था। तो in year 2014, I got the opportunity to work with an institute called Institute for Village Studies, and got to take samples from the glaciers and understand the water problems in the Himalayan region, and specifically Zanskar for the first time. And what I found and the experiences I got over the years was very bewildering, astonishing, and very threatening also. So in 2014, while we were looking for more climate adaptive technologies or interventions within that ecosystem, we were able to find artificial glaciers, which were innovated by Padma Shri Sewang Norpel. And it started in the late 1990s, actually, when a few of the villages in Ladakh were already facing water scarcity. But they were facing a very specific problem, that is that they were lacking water, or water wasn't sufficient for a particular period in the beginning of irrigation. The first irrigation water period during the end of April or beginning of May. So the main challenges and the factors were that, over the decade, precipitation was very erratic. You cannot entirely depend on this snowfall, which previously they could depend on the glaciers. Before the glaciers are warm enough to melt, the farmers could depend on this snowfall to till their lands or to humidify their lands. So because of this snow erratic pattern, on top of that warming climate, the snow lines on the peaks have also receded, so elevated quite a bit. We can see it from our own naked eyes every 2 to 3 years, and people have actually been living there, seeing the glaciers vanish within their lifetime and snow lines receding. So I worked on artificial glaciers for 4 years, implementing that in the context of my village. We had a huge glacier, during the month of June and July. We'd have no shortages, but it was very specific problem, as I told in the beginning of the first irrigation water. So that went successfully. And then in 2020, we also experimented on the ice stupa technology, which was adapted by and innovated by Sonam Wangchuk, the environmentalist from Ladakh. And the idea was similar, artificial glaciers, you were preserving the overflow of the water during the end of autumn when it was not used, and during winter, and then let it spread across more surface areas so that it could freeze over the period of few months, and then you use it at the beginning of this irrigation period.
because it was at a lower elevation, it melt faster and before the glaciers. And the second technology, ice stupas, it was similar, but it was using the downflow of the water and using gravity to, sprinkle back water in the atmosphere when it was minus 25 or 30. But only difference here is that the conical shaped ice stupas require less surface area, so it lasts longer than a more large surface area artificial glaciers. So as I understood and I experimented more on this, then I understood, well, the actual problem that we are not focusing and overlook is that these glaciers are diminishing and vanishing at a very alarming rate. So the studies that were done in 2010, by glaciologists and researchers and institutions all across the globe, we could conclude that by the year 2060, most of the glacier-dependent villages in Zanskar will run out of their glacier sources. And that is similar or little variables all across Ladakh. So you have two types of glacier. One is that villages are dependent on that for generations, and they've been entirely dependent on that. And second, the more glaciers, bigger ones, more in depth of the valley. So we thought, like, if we are coming up with these manual or technologies like ice stupa and artificial glacier, we are actually not addressing the problem to begin with. We are coming up a band-aid solution or quick fixes. Because what happened maybe in 10 to 15 years, most of these glaciers that you are forming these ice will disappear. Then what is the source of the water? Even if you are using spring water or stream water, you are entirely dependent on the glaciers directly. So we thought, like, even the surplus of the water that is flowing through the stream and connecting with the river, at the end of the day, it's joining the river. So why can't we implement a technology that is cost effective to begin with, sustainable, and can be scalable if you have the funds? So then we picked up a village called Pishu village, which was at the brink of extinction. People were thinking about actually abandoning their village. In 2018, when we visited, we witnessed that they had 63 livestock losses, mainly because they didn't have enough fodder to feed the cattle, because the glacier they were dependent on had disappeared completely. And the very weird and funny thing that I witnessed is there were government interventions, but they were building a 20-kilometer long canal construction that has been happening for more than a decade, but not even a drop of water has actually reached the village. But every year when there's less snowfall, they had no cultivation. 2018, they had zero cultivation, no fodder. So we thought, like, well, actually, technically, if you see, there is no shortage of water because most of the villages in Zanskar are along the river. So there is abundance of water in the river, that at the end joins with the Indus at Nemo confluence. But if you observe with your naked eyes, like when you're passing by, you can see when when the Zanskar River is joining with the Indus, you could figure out that the Zanskar River has more volume than the Indus itself, which comes all the way from Tibet. And the major tributary to the Indus before it joins with Zanskar is the Shyok River that comes from Siachen Glacier. So we thought it is very weird because we are actually living in the freshwater reserves where we have so many glaciers, more than 200 glaciers in Zanskar, but its own villages are facing the scarcity. Maybe there's something wrong with this. There's lack of management, there's lack of technology. So we thought, like, there's already solar abundant, more than 300 days of the year. You have so much sunlight in that region. Why not tap into that? And the technology is already available in the market, has been going on and improving over the years. And then we thought, well, we need to work on this. So we wanted to, collaborate with the government. In the beginning, they were very, very enthusiastic to really try such, such solutions and then scale it up to all the other regions where the problem is contextual and such a solution could be applicable. But what we are trying to do is not just, meeting the demands of water during this irrigation period or cultivation. We are talking about addressing the real issue. Till now, we don't have enough data and sense, monitoring of glaciers, how fast they are receding,
what are the contributing factors in these regions, because more and more roads are being connected to these pockets which were very isolated, Zanskar context, because we come from there and we have done our research and our work in that. I would like to take case study of Zanskar. So Zanskar has been pretty much isolated from rest of the world and even its immediate neighbors like Kargil and Leh for until now, So for us, even six months, we cannot get to Leh or Kargil without walking on the freshwater, the ice on the Zanskar River. So that was our lifeline. Now there's more helicopter services that has helped us. But now there are 3 roads coming in from Himachal, from Kargil, and from Leh also. So we are at the epicenter. It is almost at an equal distance from Manali, Leh, and Kargil. So we are talking about a lot of carbon emission, exponential growth of carbon emissions within that ecosystem, and exponential growth of black carbon soot that has been very little studied in these regions. So what is the problem with the glacier? First thing is, because there's not enough snowfall, there is no chance for the glaciers to multiply or accumulate more snow over the years. Second thing, because of black carbon soot that is being settled on the glaciers without any regulation, it is making, taking away or eating up the albedo, which is the reflective layer of these glaciers, which would otherwise 70% of the solar radiation would be reflected back in the atmosphere, So it is making that glacier ecosystem and habitat even more prone to heating up because it's darker. So from here onwards, the loss of glaciers is going to be exponential, multiplied by 2, 3, 4, 5, and then growing more and more and more. So in next 1 to 2 decades, we'll see much more overflow of water in the rivers, but then after that, it will subside down again. This is a problem we don't seem to address, because when we talk about other interventions, other startup ideas and ventures which are working directly with agriculture or cattle rearing, dairy, fisheries, whatever it is, in a context like Ladakh and higher altitude, glacier is the source of all these. We cannot scale up anything once the glaciers run out. We cannot scale up, barren lands and cultivate them and transform them into really high cash crop yielding lands because we are directly dependent on the glaciers. So we need to also understand that in the global warming scenario, when we talk about climate change, there's not much we are contributing to that, being inhabitants of this high altitude. But at the same time, we need to understand this high altitude ecosystem are very local to that region. So the more emissions you do in that particular region, whether it's greenhouse gases or black carbon, will remain in that ecosystem. And we don't have enough carbon sinks or vegetation to absorb that carbon back into their atmosphere. And on top of that, the black carbon soot that will be deposited on these glaciers, we don't even have enough data and research to really work on regulation. So until and unless we address that problem of glaciers, we can never know the limitation factor or the thumb rule to how much traffic should be allowed in this region. How much should we switch from fossil fuels to renewable energy, because it has to be systematic changes. As an individual farmer can adopt sustainable practices, but unless big things like if public transportation is not moved to a renewable energy, run by renewable energy, and talk about regulating mass tourism packages in these regions, our fate is, doomed. It's an apocalyptic scenario. I'm not exaggerating this, but that is the actual problem. So when we thought about implementing these solutions, there were already many villages within Zanskar. After we successfully implemented the solution in Pishu village, we got 13 more villages asking us to implement that too, in their places. And it is doable because we can now be confident and say that if there are 30, 40 villages within a region, they need this solution. If we have the money, we can actually implement all that within a year and 3 to 4 working seasons. We can do the survey. We can come up with this direct and sensible data and design just by sitting somewhere else in Delhi or some other country. Doesn't matter, because we have all the remote imageries from the satellite, and we know the exact topography of that place, the
the elevation of these places. So I'm talking about something which is scalable, that solves the actual source of everything that is dependent in an ecosystem like this. But apart from that, we also need to think about what happens when this river runs out. Even we have a solution like this, it is also still a band-aid solution unless we talk about preserving these glaciers, and that can only happen when we stop the sources of these threats and factors that contribute directly to the health of glaciers. So when I started the movement in Zanskar a few months ago, we were talking and carrying out discourses all across the region, visiting villages, talking to people, trying to make sense of the bigger threats that we'll be facing. And they seem to understand all these problems, but nobody told them, was able to communicate the research finding to them, and policy and governance, and talking about an alternative solution that as a community we can come together and decide certain things and decide policies that is very specific to these locations. Not even in an altitude like Ladakh, when we talk about something ecosystem like Changtang is very different from an ecosystem like in Zanskar. And in Sham Valley, you will have so much production of fruits, apples, apricots, and grapes, but none of that grows in Zanskar. While Zanskar has abundance of wheat, none of that will grow in Changtang. So we are more and more of these pockets being exposed to this unregulated activities and tourism and unregulated emissions of greenhouse gases. That is a very threatening thing to see. And already many people talked about different ventures and ideas about going ahead with making businesses around these around agriculture. I don't think I would like to go deeper into that. My purpose is here to really address the problem of glaciers and really seeing as communities, as collaborators, really talk about the problem we seem to overlook every time we talk about high altitude regions. That is all. Thank you very much. Yeah. Thank you, Lobsang Mamtaz. Thank you very much. Since you yourself face the problems, that's why it's good to hear that you worked out for the solutions in Zanskar. You find out the solutions using technology to address the issues of water scarcity in the region, and you work for artificial glaciers in the valley. Also, you worked for the ice stupas. You replicated the model that was very well developed by Mr. Sonam Wangchuk. Uh, Really, and I must compliment you that you used simple, fundamentals of science that are being taught in our schools to address the bigger challenges in the real world. That was really I would commendable. like to add one more thing I forgot, So Yeah. this year, not just Pishu, we were able to implement this solution 2 villages last year and 2 monasteries. So elevation of 300 feet up the mountain, So 3 of these facilities in Pishu, Bardhan Monastery and Khuktar Monastery, they're working even now at minus 30 degrees Celsius. So we're talking about, what if we could, in the winter times when the water is not used anymore, we can pump back water from this river up to higher elevation and make, scalable artificial glaciers all over and start talking about creating carbon sinks, biodiversity, and, Yeah. experimenting and studying different opportunities. Yeah, that's what I was saying, that you use simple scientific fundamentals that are being taught in schools. You use those principles in real life and, solve the challenges which were posed to the community by our wrong practices of excessive mobility, CO2 emissions and other problems. With that, I thank you, Mr. Lobsang, for joining us. And since we are running short of time, Mr. Lobsang, I would request you to answer the question which was posed to you in chat box. There's a question for you. If you could answer, that really good for the participants. And so without any further delay, I am moving to our next speaker,
Mr. Rexan Nurbu. He is a young entrepreneur from Ladakh. He has started his startup with the name the Himalayan Chocolate. Really fascinating name, that Himalayan Chocolate. So he will be talking of about his journey. Fellowship was a perfect platform for execute my ideas. Is a lab where you work on your ideas and problem you want to work on. You actually give shape to your ideas. So curriculum is designed in such way, mainly focus on your passion, whatever you expert in. You really need to dig into yourself and find you are most interested in. When you starting working on your interests, you will grow slowly, but be patient because it's a key for your success. So one day you will find yourself become master on that field, and if you continuously work on that particular field, you will become a leader one day. Because if you focus on, it doesn't matter how small the step is, how small your idea is. If you focus on every small thing, it will give you a bigger result. So I met my friend, my co-founder, Rohan. He's from Mumbai. In fellowship, we met. Unfortunately, due to COVID-19, we could not work in Ladakh. So later in October, we went to Himachal, and we together worked on product development, marketing strategy, and various other things. We started this venture by during lockdown in Himachal, by giving training of chocolate making to 5 local women. Our products are mostly handcrafted and less mechanized. We use very less machinery in our factory. It's all mostly handcrafted. So we have five different flavor infused with chocolate. We have Ladakhi roasted barley. We have Kashmiri badam. We have Kashmiri Himachali walnuts, Kashmiri pink salt, and fruit and nut. So these ingredients we actually resource directly from farmers. For example, barley we resource from Sham and Nubra Valley. Uh, we are the actually first chocolate company in Asia who produce barley flavored chocolate. There's one company in Switzerland who produces barley chocolate. So for us, it was just we were just experimenting with the local ingredients. For us, we were just doing trial and errors. So we were not sure it will work or not. So luckily, people uh, actually liked it. They liked our crunchy taste of barley. So, but what I found in Ladakh during resourcing. Barley is in Ladakh. They people very less consume. The production nowadays is very less, and I think because of people migrating to other cities, and they are going away from farming, they are forgetting how to like cultivate barley. Barley is very less producing nowadays. For example, we have other food or very uh, other superfoods like buckwheat, barley, and these are also very nutritional food. We rarely see these cultivation. So barley also people only cultivate for their own consumption, not for a business purpose. So I started to exploring every places in Sham and Nubra Valley. It was during Buckwheat Festival in Sham Valley, Skirbijan. I got to know people there consume much barley as compared to other regions of Ladakh. So especially in Domkar and Achinathang, these people they produces barley. So they happily produce barley. So we resource directly from these farmers. We hope in coming years, barley demand will increase in market and people will cultivate more barley in Ladakh. We hope through our venture, we will boost this supply chain. So at THC, our vision is to
create an indigenous range of chocolates from Himalaya that your people are gonna love, and create a sustainable livelihood for local women to promote our local products. In coming year, we going to create a winter livelihood in Ladakh also. Our startup was selected in IIT Mandi incubation in 2020. It was all recently got awarded by Ritesh Agarwal, founder of Oyo. So currently, we are like happy to announce that we employed more than 10 local women in our area, fully trained in chocolate making. We will try to experiment other local products from Ladakh and Himachal and Himalayan region. So mm, one thing I will say to our upcoming entrepreneurs or younger entrepreneurs, that uh, if you are following your dreams, if you are following in this entrepreneurship, just follow your passion. Do what your heart takes you. You learn skill of how to. You have to learn how to make business out of your passion. Right? It is hard to make money out of it. So I'll say, don't think of getting rich in just to first year. Just focus on how to grow your company. Focus on what you have created, then success will come to you along with money. I was always wanted to work on local products, such as we have many superfood like barley, buckwheat, herbal plants, and we have lots of potential in our area. Hello. Yeah, yeah. Yeah, we have lots of potential in our area, like whether it is water management, waste management, heritage conservation, or tourism, or local products. When you going in a field of entrepreneurship, I will say, first ask yourself this question: why you are doing this entrepreneurship? Because it is not an easy way. You have to ask yourself, are you solving any problem? Are you contributing to your region? Because you have to ask why people will buy your product. It has to be unique selling point. So you will face many difficulties, whatever your field are. uh, it can be product making or any services. For successful startup, I'll say 20% is depend on your planning, product making. After you fully develop your product, 80% is depend on your marketing. You have to do marketing by yourself. It's a big deal. I remember during our lockdown, it was partially lockdown in Ladakh. I used to sell chocolate by walking a long distance from Leh to other markets like Skalzaling and Choklamsar. Similarly, in Himachal, we did that. We did our own marketing. We had to go other places, long distance. We had to go. It was a very partially lockdown at that time. So nowadays it's very easy for young entrepreneurs, because our UT government is promoting local entrepreneurs in every way. And like during exhibition you can promote your product in you can get a good networking during exhibitions and all. So I'll just stop here, and all the best for the coming entrepreneurs, and thank you. Yeah, thank you, Rigzan Norbu, for the talk. You very well said that if you want to be an entrepreneur, you need to follow your heart and your Yeah, mind. Yeah, so for your business also, you traveled all the way to Himachal and then started yeah, with some training programs, and then you transformed yourself to the manufacturing, but still with less mechanized, but by yeah, yeah. It's all. handmade. Yes, and yes, I applaud your effort that you adopted the method of go local
and vocal for the local. So you used local ingredients like barley in your product. So yeah, really commendable journey. I wish those who are listening to Mr. Rexen Norbu can understand how and you need to start and how you have to struggle and how you yourself put your efforts in making it a venture a success. So with that, I thank you, Rexen, for joining us, for telling his story, for motivating others to follow his path. Thank you. Thank you for this opportunity. Thank you so much. Thank you, Rexen. Yeah. Thank you. With that, we are moving to our last session of this 2 days workshop on futuristic technologies in agriculture for sustainable living, and no living is possible without water. So our last session is very much devoted to the water, and I believe that would be of really interest to the people of Trans-Himalayan region, particularly from Ladakh, who are attending this workshop from Ladakh or Himalayan region or Northeast or any other region, because water is very much important. So without any further delay, I would like to invite our first speaker of this session, Dr. Praveen Kumar. Dr. Praveen Kumar is a doctorate PhD holder from agriculture. He's an agriculture extension scientist from SCOST Kashmir, Shere Kashmir University of Agriculture, Science and Technology from Kashmir. His major research work is in the area of resource conservation, sustainable agriculture, communication, and adoption. So I request Dr. Praveen to share his screen and camera and also the microphone so that we can see and hear to him. Dr. Praveen, over to you. Okay, sir. Okay. Hello. Hello. Yeah, hello, Dr. Praveen. Sir, am I audible, sir? You are audible, but sir, we cannot see you. Please switch on the camera, sir. Okay, okay, sir. Okay. Yes, sir. Yes, now we can see you. So how sir you gonna present? You'll be talking or you will be presenting something, sir? Sir, I will. It will be lecture type of. It will be lecture on this sustainable water management. Okay, sir. So thank you very much, sir. Over to you, sir. Thank you, sir. Thank you. First of all, sir, I would like to congratulate you for choosing a very relevant topic, futuristic agriculture in the agriculture sector. In the participant list, I am also seeing basically I have left this lay about a month back. Our program coordinator, Dr. Firozdin Sheikh, he is also attending. Good afternoon, sir. My colleagues, Dr. Ram, Dr. Kuntona, to all of you, good afternoon to all of you. So I will straightforward start from this water. As we all of us know, that water is a very precious natural resource. It is basically I can say it is an essential condition. It is absolutely necessary and an infinite and irreplaceable resource, having enormous importance in agriculture sector, in our households, in health sector, in industry, in our culture, and basically in the national integration, in the integration of the country. Our planet is called as a blue planet because it is a vast reservoir of water in the form of different water bodies, ponds, rivers, lakes, ocean, and many other water bodies. So if I talk of the water availability of the total water available on this planet, about 70 to 80% is used for irrigation, that is in agriculture sector. 22% is used in industry and rest 8% is used for our domestic chorus.
So basically, owing to this injudicious and misuse of water, the water resources are under threat. So basically, this threat to the water resources I will discuss them in under 4 headings. First is the water scarcity. The second is the water pollution. Third is the water conflicts, water disputes, and 4 is the threat arising out of the climate change. So when I talk of the water scarcity, this water scarcity comes in 2 types. One is the physical scarcity, when there is not enough water to meet our demands. And second is the economic scarcity. Economic scarcity is when a country or a region lacks in investment in infrastructure, or the country does not have the technology to draw water from its water bodies like rivers, aquifers, or other water resources. And this economic scarcity is what we are witnessing in countries like South Africa and Middle East countries, where these countries are poor. They don't have the infrastructure to invest in creating necessary infrastructure for drawing water from their water bodies. Next, I will talk about the water pollution. At present, about 70% of the water bodies are polluted, and this pollution is due to the industrial effluent coming out from the different industries, the municipal waste, the sewerage, the sludge, the agrochemical we use in the fields, the oil spills, and all of us know that more than 60% of the waterborne diseases like cholera, typhoid, malaria, dysentery, and jaundice, these are a result of the. If the talk of our country, at present, 40% of our population in Indian cities uh, still suffer from lack of basic amenities, which include also the availability of safe and clean drinking water. The third aspect of water I will discuss here is the water conflict or the water disputes. Actually, these water conflicts and water disputes, these arise out in conflict between different countries, different states, and different groups. Right now, in our country, we also have witnessed water disputes between different states. The Karnataka and Tamil Nadu, they have a water dispute over a sharing of the Kaveri River water. So basically, water disputes arise due to the opposing interest of those who use the waters. And next threat arising out of the water is due to the climate change. Climate change, as all of us know, is due to the rising temperature. And the United Nations says that by 2025, about 1.9 billion people in different parts of the world, they will face water scarcity. They will have to live with water. And given the rates at which the temperature is increasing and the climate is warming, it would also severely affect our agricultural production, basically agricultural crops which grow in the in a rain-fed condition, which depend upon water for their timely growth. And mostly these crops are maize and paddy. So regions such as Africa, West North America, South Africa, all these are prone to climatic change and are more vulnerable. Of climate change. If we live in a region low lying, they are under constant that their areas, their regions will be submerged under the increasing sea levels. So there is another threat that the climatic displacement will result in millions of people that will have to move from present position to different locations. Besides this climatic change, the peoples from the sub-Saharan Africa, the South Asia, and Latin America. I will just present the data. In sub-Saharan Africa, about 86 million people. In South Asia, to which our country also belongs, about 40 million people. And in Latin America, about 17 million people. They are prone to climatic displacement, means they have to shift from their present position to new locations. And if we see the global figures regarding the water scarcity, about 3.2 billion people live in areas where there is high water shortage. And of this 3.2 billion
people, about half of them are in South. So if we talk about India, which is home to about 18% of the population, has just only 4% of this water resources. And of this 4%, India uses 70 to 80% of that water in the agriculture sector. I would like to quote a report of Central Water Commission that a couple of years back, about 85.3% of the total water consumed in the country was used for agriculture. See how important is the water for agriculture sector in the country. To the different factors I had talked earlier, like the misuse of the water, overuse of the water availability per capita in the country is on a declining trend right from the independence, when about 5,000 meter cubic of water was available per capita in India. It has now reached to less than 2,000 meter cube. And the census 2011 in the country put India in a league of water. We are a water deficient nation. A water deficient nation is that in which the per capita availability of water is less than 1,500 metric cube. And we are already in the list of water deficient nation, basically because most of the water, 70 to 80%, is used in the agriculture. I will now talk on how this water use can be made more sustainable in the agriculture sector. When I talk of agriculture sector in the country, we have a total land area of 342 million hectare. Of that 342 million hectare, about 142 million hectare is under agriculture. And of this 142 million hectare, more than 60% is under rain-fed conditions. Means rain-fed is that region where agriculture are totally dependent on timely availability of rainfall. If it is placed timely, then the farmer in the region go for sowing of crops. If rains are not in time, then that vast 60% of the area remains unsown, ultimately affecting the food security of the country. Basically, what is happening over the years, that due to our faulty and our crude and unscientific method of agriculture is on the brink of a catastrophe. Our poor soil management practices, our poor water management practices has already led to the degradation of our natural resources. Our land is getting degraded, our water has got polluted, our air has become toxic. We cannot even breathe in such a type of air. So when I talk of agriculture, so India, our country, India, accounted for almost 1/4 of the total groundwater extracted. Of the total groundwater that is being extracted for using it in agriculture sector, India accounted for 1/4, means 25% of the total global water India has extracted for its agriculture sector. And one thing more is that India is also the largest exporter of groundwater. When I say largest exporter of groundwater, I would like to make it more elaborative that how India became a largest exporter of groundwater. That India, when after independence, when Green Revolution took place in the country, Green Revolution mostly focused on crops like paddy and wheat. And we know paddy is a water guzzling crop. Paddy requires water for almost whole of its growing season. And if we produce 1 kg of paddy grains, if we produce 1 kg of rice, estimates say that we require 2,800 liters of water. It is a big amount of water which is used to produce 1 kg of rice grains, 2,800 liters of water. For paddy grain, for 1 kg of paddy. Similarly, if we take of wheat, for 1 kg of wheat, we require on an average 1,654 liters of water. And if I talk of a family having 4 people who consumed rice
the amount of water used by that family turns out to be 84,600 liters per month. And in 2014-15, India exported 37.2 lakh tons of basmati rice. And with this export, India also exported 10 trillion of water that was used to produce 37.2 lakh tons of rice. If we take the rough estimate of 1 kg of rice that is produced by consuming 2,800 liters of water. So definitely no one would like to call it a sustainable agriculture practice when we have to use 2,800 liters of water for just producing 1 kg of rice. So as agriculture is the biggest withdrawal of water, so there is an urgent and immediate need to use water in agriculture in a sustainable way with the basic principle of more crop per drop. When I talk of the agriculture sector, our unscientific and crude and the traditional this irrigation methods. When I talk of the irrigation method simply we use and has been used till date is mostly the canals. And we see in most of the cases the canals are not cleaned properly. When we do not keep the canals cleaned properly, it results in 20 to 30% loss of water. And that loss of water occurs because the canals have not been cleaned properly. There are cracks in the cleans, there are seepage losses, and that 20 to 30% of loss turns out to be huge value when we calculate it in terms of irrigation requirement of different crops. Also, what farmers in the country do, they flood the crops. Flooding also results in a considerable amount of water loss. In the country, farmers do not go for scheduled irrigation. We know the scientific package says that crops require irrigation at different stages, but we do not use that schedule. We go for unscheduled irrigation. When a crop needs 4 to 5 irrigation, we go for 6 to 7 to 8 irrigations. That ultimately also results in huge water loss. And all these unscientific practices ultimately affect the water availability in the country. No, what we have to do, what are the sustainable agriculture practices that use water in a more sustainable way, that conserve water, that protect water, and that result in judicious use of water. So first is, all of us have heard about tillage. When we go for performing different plowing operations after the harvest of a crop, when we plow the land, when we open the soil, when we expose the soil, that results in a considerable loss of water due to evaporation. So the modern agriculture says that we have to avoid going for tillage. We have to avoid going for plowing and other operations. We have to go for zero till or minimum tillage. That tillage, we have to go for only that tillage that is required. So the minimum tillage or zero tillage is the new paradigm for the conservation agriculture, where we do not need to go for plowing after the harvest of the crop. Simply we have to go for broadcasting the seed of the next crop. So avoid tillage. Next, we are also witnessing that in our country the land is not leveled. Basically, when the land is not leveled, the water cannot be applied to that field uniformly. So farming community should also level their land properly so that the water gets applied to their fields uniformly. Another simple thing is that in the hilly areas, in mountainous regions, the fields are usually in a slopy terrain. So when we work on such fields, we have to sow or perform different operations against the slope. When we go for performing or sowing the seeds across the slope,
we ensure that the losses due to the erosion, erosion losses due to water or air, they are minimized. In the country, still farmer go for broadcasting the seeds. The seed, when broadcasted, they require more seed rate. The scientific method is that we should go for line sowing. And for line sowing, the machinery, different types of machinery is available in the market. We have seed cum fertilizer drills where the farmer have to put the seed and fertilizer in a plow. And when the plow moves on, the seed and the fertilizer that gets incorporated in the soil at the proper depth and at the proper distance, ultimately reducing the seed rate and the fertilizer rate. So we see in our country, we do not go for recommended dose of fertilizers. When we say scientific package is that we should apply 5 kg of urea to wheat. I have seen farmers applying 10 kg, 12 kg of wheat in the greed that the more the fertilizer they apply, the more yield they will get. No, this is not the case. The more the fertilizer they will apply, the more it will be a unsustainable practice, ultimately adversely affecting our environment, resulting in the pollution of water bodies, air, and other natural resources. Another this resilient technology, agriculture technology, is that when I talk of irrigation, there are modern innovative irrigation technologies like drip irrigation. We have this sprinkler irrigation. Basically, what is drip? Drip irrigation directly supplies directly supplies water to the root zone of the plants, ultimately reducing the water requirement by 30 to 70%. And if a drip irrigation reduces the water requirement of the crop by 30 to 70%, this would be used to irrigate how much more of the land in the country. So basic, simple techniques. All of us do not have to go for some big things. If we take simple steps, simple techniques, we can contribute too much towards the sustainable management of all the natural resources in the country. Similarly, if we maintain properly our irrigation channel, if we properly clean them, if we see that they do not have any crops, most of the conveyance loss in these irrigation channels can be reduced. So the country now is focusing on this natural farming, zero budget natural farming, and organic farming. Basically, what is the basic philosophy behind such techniques and such farming methods is that these do not use the external chemical inputs. These do not use the harmful chemicals, urea, synthetic fertilizers, other plant protection chemicals that have already led to the degradation of our natural resources. We simply replace them with our local produced organic manures, maybe that in the form of compost, maybe that in the form of vermicompost. There are different biofertilizers, there are different living organisms, which when used in the soil, maintain the soil health, maintain soil moisture, and also protect our crops from different diseases and insect pests, for which we have to use the chemicals. There are many scientific practices, as I have already talked about paddy cultivation. For 1 kg of paddy, we require 1,000 liters of water. There are scientific practices. We have the SRI, System of Rice Intensification, SWI, System of Wheat Intensification. All these techniques are based on this proper use of water. Instead of collecting water in the field, we just simply flood out the water in paddy field from one crop to the other. This ultimately results in a considerable amount of saving of the water. So another thing is promoting non-consumptive use of water. One is consumptive use of water term, and second term is non-consumptive use of water. When I talk of consumptive use of water, I mean to say that the consumptive use is when the water required in agriculture sector does not returns back to the resource from which the water has been drawn. It is consumptive use. Water has been consumed.
One is the non-consumptive use. Non-consumptive use means when water remains in, or the water is immediately returned to the source from which water has been extracted. Example of the non-consumptive use of water is we have a fish pond. We have a fish pond. It is a non-consumptive use of water. Water returns immediately back to the fish pond. We have seen in water in this parks or in gardens that is used for recreational activities. Water comes and goes back. Water comes and goes back. So we have to work on creating a farming system model where there is non-consumptive use of water. Means water that is used in an enterprise immediately return back to the farming system, ultimately, and this preserving the water uses. Another method of artificially water harvesting is the farm ponds. Now, I have already talked about that 60% of the area in the country is under rain-fed conditions, means that area entirely depends upon timely availability of rainfalls. So in that water deficient areas, the Kandi areas, the rain-fed areas, water has to be harvested. Water harvested means collecting rainwater in farm ponds. There are so many cases in India where farmers have dug ponds, and when the rainwater comes, the water gets collected in that ponds for further subsequent use in the crop when there is water scarcity in that areas. Besides farm pond, many farmers in the country are also using their rooftops to harvest water. They collect all the rainwater over their rooftops, and from their rooftops, they just put a bottle, plastic bottle, cut it from the bottom, place it where the water exits from the roof, and put a plastic pipe in the mouth of bottle and collect all the water in a pond or in any other tank or in any other structure that they have created or placed down. So these simple techniques, if adopted and if they are implemented, and we also have to make farmers aware of such simple techniques, and if they are adapted in will and spirit, they are definitely going to do wonders in terms of conserving water, in terms of the judicious use of all our natural resources. One thing more I would like to share with you, that at homes, in our kitchen, in water, due to non-repairing of our taps, water gets lost in drops, and drops. And reports suggest that in India, due to these leakages in our taps, at our kitchens, in our washrooms, in our bathrooms, 30,000 liter per year per household of water is wasted, simply because our tap gets leakages and we do not find time to get them repaired. So such simple techniques we should, if we see any of our tap in a leakage condition, we should immediately mend it. And our bathing habits, instead of a prolonged bath, we can take a shower. That will also save so much of our water. So ultimately, to all the participants, it is my humble request and advice, so to all of us, to please take simple steps. Otherwise we are heading for a condition that will be detrimental to this planet, and with this I would stop here for the participants to have some queries I which I can respond to. So thank you, sir. Thank you. Thank you, Dr. Praveen, for joining us on this session over water and enlightening us how to adopt conservation practices and other things. There's a question in the chat box, sir. I will read it for you. Yes, sir. What is the main differences between zero tillage, minimum tillage, and reduced tillage?
Will resource conservation technology be suitable for Ladakhi conditions? Yes, sir. When I talk of the resource conservation technologies, I have worked for over than 2 years in Ladakh conditions. Resource. When I talk of resources, I do not mean only water. We have water, we have land, we have air. All these are natural resources, and agriculture is one sector where the resource conservation technologies can be applied very effectively to tackle this threat of deteriorating our climate and our environment. Simple technologies in Ladakh conditions, we have mulching. We apply mulching, and simply we put plastic sheets on the crop, and what they do, they reduce all the evaporation losses. They reduce the incidence of growth of weeds, which are unwanted plants which interfere, which compete with the main crop for all the resources like water and nutrition. So these resource conservation technology, like we have the protected technologies, the greenhouses, the trenches, the polyhouses, all these are protected technologies that conserve our natural resources, that conserve water, that conserve our land, that maintain the fertility of the soil, and all other resources of the planet. Okay. Regarding zero tillage, yes, Yeah. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You can, sir, continue your answer, sir. Regarding this zero tillage and no tillage, sir, there is not much difference between zero tillage and no tillage. Actually, there are certain crops. There are certain crops which, when standing, let me take the example of paddy crop. Before harvesting it, when it is ready, when it is ready to be harvested paddy crop, we sow the seed of fodder crop like barsim in the standing crop. We sow the seed of barsim crop in the standing paddy crop. In that case, that is a zero tillage. Means we do not have to disturb the soil after the harvest of the previous crop. This is zero tillage. And in some cases, where we have to simply go for plowing, not deploying, where we have to simply go for plowing, that is a case of minimum tillage. Zero or no tillage are the same, but it depends upon crop to crop. For some crop, we have to go for zero tillage, and for some crops, we have to go for minimum tillage. The basic principle is the conservation of the water and conservation of our resources. Thank you very much, sir. I request my teammate Tenzin Chosyang to summarize the talk for all the participants. Chosyang. Thank you, Dr. Praveen Kumar, for letting us know about the sustainable water use and how to manage water resources. We learned about the issues of water scarcity, water pollution, and its effect on environment. We also learned that water availability in India per capita income is declining with each passing days. Additionally, to cope up with the water problems, we also got to know about the rainwater harvesting to be used for agriculture purposes, and usage of sustainable agriculture water practice, including zero tillage, proper water leveling, line sowing of seed, usage of modern irrigation techniques. So thank you, sir, for the talk. We believe this information will be helpful to the farmers and entrepreneurs from Ladakh. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Praveen. Dr. Praveen, since we are running late, can you answer some questions which are pending in chat, sir? Yes, sir. Sir, participant can share their questions on my mail. I will definitely reply to them. Sir, okay, fine.
So I request my teammate Sandeep to put email of Dr. Praveen in the chat so that Yes, any yes. question can be sent on the mail. Thank you very much, Yes, sir. yes. Yeah. Thank you, sir. So, Thank you. moving forward to our new next speaker, Dr. Zigmet Yangchan. Dr. Zigmet is a scientist at HMA RRI, SCOST, Kashmir. She is doctorate in water management engineering. Her major research work deals with water management and vermicomposting. Dr. Zigmet recently published in the area of revenue and employment generation of the farmers in Trans-Himalayan region, Trans-Himalayan cold arid region using vermicomposting. So I request Dr. Zigmet to talk. Dr. Zigmet, can you hear us? Dr. Zigmet, please switch on your camera so that we can see you. Okay, sir. Yeah. Are you able to hear me now? Yes, yes, we can hear you, but we can't see you. So please switch on your camera. Okay. Camera is on, right? Are you able to see me, sir? It's yet to come through, but I believe it's okay. And you can present your, you can share your presentation as Okay, well. sir. Yeah. 1 minute. Hello. Yeah, Dr. Zigmet. Are you able to see my presentation? Yes, it's coming through. It's slightly delayed. I believe we can The see net- your mouse. We can see the mouse cursor on the screen. So I believe we will be seeing your presentation also. Yes, we can see your mouse moving, but It's not not coming. the presentation as such. Yes. Just wait, sir. Huh? I will check the this net connectivity is a little poor here. Is it visible, sir? Hello. No, no, Dr. Zigmet, we cannot see. Can you share your slide deck to me on my email ID? So I will be presenting your slide deck from here and can Okay. navigate on your Okay. command. Okay. Sure. So I shared my email ID in chat box. Just wait, sir. Just wait, huh? I'm not able to see you right now. Hello. Yes, Dr. Zigmet. I'm not able to see you. You are missed. Okay. No. Actually, I switch off my camera because I thought you have not reliable bandwidth at your side. Okay. Just wait, sir. Can you please share your mail ID? I dropped in chat box. I'm not able to see you right now. No, in the chat, you can see that the chat box, the bubble on top ribbon of your screen, you can click the chat show conversation thing, and there you can find my email ID. I'm writing it again. Or I request Dr. Kunzas to please coordinate. Please send my email ID to Dr. Zigmet, or Mr. Mohit may please send on WhatsApp or SMS to Dr. Zigmet.
I request all the participants to be stay patient, because we have sometimes this sort of glitches in dealing with technology. We request you to stay connected. In the meanwhile, we'll be settling all these issues. किसने भेजा उनको ईमेल आईडी? Dr. Zigmund, you received my email ID? Dr. Zigmund, you are on mute. So can you unmute yourself so that at least we can hear you? Zigmund. Hello, Andy Shekhar sir. I have shared your email ID. Okay, yeah. Thank you, madam. I request all the participants to be little patient, because we sometimes ran into some problems due to technology, but having these experts on board is really difficult. So I believe we can wait for some time. Dr. Zigmund, please unmute at least yourself so that we can, our participants can hear you at least, so that in the meanwhile we can have this PPT issue settled. May I try once to share my PPT, sir? Yes, Dr. Zig. Yes, please. Hello. You try from your end, because it haven't, because I haven't received in my email. In the meanwhile, you can keep trying. I will try.
Does it came? यहाँ पे दिख रहा है. Okay, we cannot see as maybe due to latency or delay in the network speed, we can't see. Now have few weeks maybe. Got it. You Dr. Zigmund, if it is due to the bigger size of the PPT, you may please save it as PDF, and that PDF can also be shared. That would be lighter in the weight and lighter on resources. Just give it a try. Okay, sir. Yeah. Nice, share masum. Email us. Have you sent me the PPT, because I cannot, I haven't received it. Share them. Share. I share kanchun lo ina masum. Share the taga call actually. Share masum ba te fi mail bukol. Yeah, now I'm in send you. I send you. I send. Yeah, I have sent this PPT, sir, on your mail. Kindly check. Okay. I am checking. Yeah, I received your PPT. I am just opening and sharing it. Give me just 30 seconds. Okay. Sir. Go. Yeah, thanks everyone for being patient. Dr. Zigmund, over to you. Zigmund. Yeah, you can ask me whenever you want to navigate the slides. I will navigate. Okay, sir. May I start now? Yes, Dr. Zigmund, please start. Okay. Good afternoon, everyone. Myself, Dr. Jigmit Yangchen, working as a scientist in Sher Kashmir University. Right now, I'm heading one of the institute, Krishi Vigyan Kendra, KVK Nyoma. And today, sir, hello. Yeah, hello. Yes, Dr. Zigmund, you want to say something? I share one गलती से दूसरा वाला वो आपको भेज दिया. चलो मैं इसी पे मैं आगे वो कर लूंगी सर, कोई इशू नहीं है. Okay, fine. है ना, क्योंकि मैंने 2 प्रेजेंटेशन बनाया था, तो मेरा जो प्रेजेंटेशन का जो टाइटल था, जो मेरे को शेयर करना था, वो दूसरा पहुंच गया आपके पास. सो कोई बात नहीं, मैं दूसरा जिस तरह से उसी तरह से मैं शेयर कर दूंगी, कोई इशू नहीं है. ठीक है ना सर, प्रेजेंटेशन का इतना वो नहीं है. एनीवेज, so water issues and its management in Ladakh. So basically मेरा जो काम है सर, जो
फील्ड पे मेरा ज़्यादा काम है, जो मैं आप लोगों को क्या फील्ड में लद्दाख में क्या क्या वाटर्स पे इश्यूज पे वाटर इश्यूज है और इस पे मैनेजमेंट में अपने तरफ से एज ए साइंटिस्ट क्या क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया, इस पे मेरा आज का चर्चा होगा। जैसे कि हम सब पहले मैं प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं छोटा सा वो ब्रीफ वाटर के बारे में थोड़ा सा, वैसे तो सबको पता है फिर भी छोटा सा मैं वाटर, व्हाट इज वाटर, वाटर से मैं शुरू करना चाहूँगी। चलें, वाटर इज ए लाइफ। अगर हम वाटर के बिना हम लाइफ को हम सोच भी नहीं सकते। जैसे हमने अपने बचपन में हमने ये चीज़ पढ़ा कि 97% of water resources is saline water and 3% of water which we can use, हम यूज कर सकते हैं, जिसमें 2% जो हमारे जो है फ्रोजन वाटर है और कुछ अनअवेलेबल है ग्राउंड वाटर में रहने के। ओनली 1% वाटर इज यूज फॉर इरिगेशन पर्पस एंड इन दिस वे हम कह सकते हैं कि हम कहते हैं कि मीन्स मेन जो वाटर स्कैरिसिटी हम क्यों कहते हैं, वाटर स्कैरिसिटी इसीलिए कहते हैं जो हमारे पास जो रिसोर्सेज है 1% वाटर ही जो अर्थ का है विच इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, विच वी कैन यूज फॉर आवर ओन पर्पस। अदरवाइज 2% जो है हमारा माउंटेन ग्लेशियर्स में है, कुछ तो हमारे ग्राउंड वाटर में है which we can use, we can't use, and 97 is saline water जो हम बेसिकली हम अपने चाइल्डहुड में हमें पढ़ाया जाता है। और जितने भी अर्थ में beside that distribution of population and water resources पे हम जब बात करते हैं तो एशिया में हम ज़्यादातर हम ये बताया जाता है वाटर स्कैरिसिटी की। किस बेस पे हमें वाटर स्कैरिसिटी की बात जब बताते हैं, जब पॉपुलेशन और वाटर रिसोर्सेज के बारे में हम जानकारी देते हैं, एशिया में 60% पॉपुलेशन हायर देन जितना हमारे 36% ही वाटर रिसोर्सेज है। जैसे यूरोप में है वैसे ही हमारे जो अफ्रीका, इन एरियाज में जो वर्ल्ड वाटर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात जब हम करते हैं, इन एरियाज में हमारे वाटर स्कैरिसिटी को ज़्यादा देखा गया है। और बिसाइड दैट इन 21st सेंचुरी हमारे जो विद वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है और इसकी वजह से हमारा जो वाटर डिमांड पे सबसे ज़्यादा थ्रेट है और इस पे वाटर पे ज़्यादा प्रेशर है और पहले से हमारा 6 गुना हमारा वाटर की डिमांड बढ़ गया है। क्योंकि अब प्लेसेस लाइक लद्दाख, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लद्दाख की जब कंडीशन पे जाती हूँ तो अब विद चेंज लाइफस्टाइल का चेंज होते हुए, पहले हमारे जितने भी हमारे वहाँ पे लोकल स्टोरेज यूज करते हैं, ड्राई स्टोरेज जो यूज करते हैं, मगर अब देखा जाता है कि दिन ब दिन हम मॉडर्न स्टोरेज को यूज कर रहे हैं। तो अभी डॉक्टर परवीन साहब भी बता रहे थे कितना हमारे वाटर विद इन डे टू डे हमारे कितने वाटर्स हमारे यूज हो रहे हैं। जैसे हमारे जो वाटर्स चाहे बाथरूम में ही अगर हम देखते हैं तो बाथरूम में भी फ्लश करते हुए हमारे 8 to 10 लीटर पर मिनट में हमारे हिसाब से फ्लश आउट में ही जाते हैं। तो वैसे इस टाइप से हमारे वाटर डिमांड्स भी उसी हिसाब से हम बढ़ रहे हैं। तो इससे ज़्यादा सबसे इफेक्ट कौन हो रहा है? जैसे इससे सबसे ज़्यादा हमारे जो एग्रीकल्चर लैंड्स पे भी पानी की जिस तरह से इफेक्ट होगा, लैंड एनिमल सब पे हमारे इसका इफेक्ट होगा। अब हम जब मैं ग्राउंड लेवल पे आपको बताती हूँ तो लद्दाख में ऐसे गांव भी है, जैसे शुन है एक जंस्कर में, जिसमें गांव ही माइग्रेट हो गया है पानी की कमी के, जो कि सोचने पर भी आप लद्दाख जैसे अभी एट ए टाइम बहुत सारे जैसे राजस्थान वगैरह में तो हमने देखा हुआ है कि पानी की कमी के, मगर लद्दाख जैसे गांव में जगह में भी गांव के गांव माइग्रेट हुआ है।
तो जो कि वाटर स्कैरिसिटी से गांव ही माइग्रेट हुआ है उससे, और साथ में और ये जो प्लांट्स पे और लाइफस्टाइल पे इनका बहुत बड़ा असर हुआ है। और इस बिसाइड दैट हम वर्ल्ड वाइज हम देखा जाए तो गेटिंग clean water is a very main problem. 1 billion people who is not able to access the clean water right now, and 4,100 child every day, 5 child every day, they are dying because they are not getting a clean water. And I feel अब हम अपने आप को खुश नसीब समझना चाहिए, खासकर लद्दाखी वाले, क्योंकि अभी स्टिल वी आर गेटिंग ए क्लीन वाटर। बट ऐसे भी दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको पीने के पानी भी नहीं नसीब नहीं होता है। और सबसे मेन लीडिंग वो है हमारे छोटे बच्चे जो अभी डेथ हो रहा है, जिनसे वाटर बोर्न डिजीज, डिहाइड्रेशन, इन सब चीज़ों से हमारे बच्चे डेथ हो रहा है। और अब मेन है, अब लद्दाख की जब जो अब फील्ड वाटर इश्यूज की जब मैं बात करती हूँ, मैं आज जो आपसे शेयर करूंगी जो रियल रूट पे हमारा फील्ड पे किस तरह से वाटर की स्कैरिसिटी बढ़ रही है, वाटर में क्या क्या इश्यूज हम देख रहे हैं, उस चीज को मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहूंगी। वेल मेन पानी तो लद्दाख में अभी plenty of water is there, but the main question is in Ladakh, कितने दिन वो पानी सेव है, that is a big challenges now. दिन ब दिन with the increase of tourism as well as population, हमारे लद्दाख के जितने भी streams और जो rivers हैं, they are getting polluted day by day, and it become an alarm for Ladakh कि अगर, और हमारे पास जितने भी ग्लेशियर्स है, दे आर रिट्रीटिंग लाइक एनीथिंग इतने स्पीड्स में, क्योंकि विद ग्लोबल वार्मिंग जिस रेट से चल रहा है, उस हिसाब से हमारे वहाँ पे लद्दाख टोटली वी आर डिपेंड अपॉन ग्लेशियर वाटर। एंड ग्लेशियर वाटर जब हम बात करते हैं तो जितने भी स्ट्रीम्स और ये सब चीज पीने के पानी के आले होने की भी खतरा है, क्योंकि जितने भी पानी अभी जितने रिवर और स्ट्रीम है उनमें आहिस्ता आहिस्ता हमारे पोल्यूशन बहुत बढ़ रहे हैं। और सबसे आप एक केस स्टडी में आपको शेयर करनी चाहूंगी, जैसे कि सख्ती है, सख्ती में चमड़े और सख्ती में, और स्कारा जहाँ वेटलैंड से टोटली वेटलैंड होते थे हमारे 15-20 साल पहले, वहाँ पूरा टोटली वेटलैंड होते थे, और दे आर टोटली नाउ डाइड। क्योंकि वहाँ पे आप अभी आप प्रेजेंटेशन आप देख पा रहे हैं सर? हेलो 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 या डॉक्टर जिगबर्ट, हाँ जी, प्रेजेंटेशन वो है जो हमने शेयर किया है। हाँ। आप अगर नेविगेट करने के लिए बोलते हैं तो हम कर सकते हैं, देखिए जरा। अभी एक मिनट सर, मैं अपना प्रेजेंटेशन पढ़ रही हूँ, एक मिनट सर। हाँ अभी, हाँ जी, अब ये हमने अभी बता दिया 97%। अब पीछे चलिए, ये भी मैंने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड वाटर रिसोर्सेज की जब मैंने बात की, वो अभी ये मैंने बता दिया सर प्लीज। ये जितने भी हमारे इन 21 से वाटर, ये भी हमने बता दिया सर प्लीज। 6 ये भी हम बता दिए जी, बता दिए, ये भी बता दिया। 1 billion I already explained. Next sir।
हाँ, अब यहाँ पे है सर, जो causes of depletion of water, this is a major problems which we are observing day by day now in Ladakh. यहाँ पे जो ये एक वाटर हब होते थे once upon a time, यहाँ पे मेन इशू क्या है सर यहाँ पे कि इसमें इस टाइम इतने हैंडपंप्स इस गांव में 300 हाउस होल्ड है और 300 हाउस होल्ड में 300 सबमर्सिबल एंड हैंडपंप्स है और दे आर सेम टाइम इस जो ऊपर वाले जो आप देख पा रहे हैं जो पिक्चर्स, इट बिकम नाउ पूरा 60 ऊपर फॉर्मेशन हुआ है। वंस अपॉन ए टाइम, आज से 10 साल पहले ये टोटली ग्रीन और वेटलैंड होते थे। जो यहाँ बच्चे जो लद्दाख से हैं दे कैन सी कि ये चिमड़े और सख्ती का जो वहाँ पास्चर होते थे उस एरिया का है। अभी ये कंडीशन क्यों हुआ, अगर आप हम जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे दिन का 30 से 40 वाटर टैंक भरा जाता है, सबमर्सिबल पंप, जिससे दिन का 20 से 30 वाटर टैंक लेते हैं और 400 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी को जमीन से निकाला जाता है। अब इस कंडीशन को देख के हम बता सकते हैं कि कितने अंडर सच पूरा जमीन का जितने भी पानी है उस चीज को हम पूरा निकाल के पूरा ये एरिया ही पूरा ड्राई हो गया है, जो वेटलैंड हुआ करता था आज से 10 से 12 साल पहले। और इस गांव में मेन इशू क्या है सर, जितने भी हाउस होल्ड है 300 हाउस होल्ड में इन्होंने हैंडपंप वगैरह, और जितने भी रिवर और स्ट्रीम है दे आर गेटिंग पोल्यूटेड बिकॉज ऑफ टूरिज्म। अब ये टूरिज्म का क्या है, ऊपर जो चंगला है, चंगला अभी सब लोग पंगोंग लेक जाते हैं, पर हाँ आई अप्रिशिएट कि अभी हम लद्दाख में बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर एक साइड से एक डिजास्टर नेचर के साथ इतना बड़ा डिजास्टर भी है, क्योंकि जो चंगला है, चंगला पे मेन जो बाथरूम के प्रॉपर सिस्टम ना होने की वजह से वो जितने भी बाथरूम के पानी जो है जा रहे हैं, जितने भी स्ट्रीम्स जो ग्लेशियर मेल्ट होके स्ट्रीम्स में जा रहे हैं, और दे आर नॉट इन ए कंडीशन टू ड्रिंक। So people, what they did, they did a bore well as well as hand pumps as well as submersible. Now in गांव में पीने के पानी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स है, और इस चीज को हमने पॉलिसी मेकर से सबसे भी डिस्कस किया। अभी उनके यहाँ पे वाटर टैप का सिस्टम हो रहा है सर। नेक्स्ट, और अब इससे क्या अगर डिक्लाइन होगा तो क्या फर्क हो रहा है अभी इन सब चीजों। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे बहुत बड़ा, फूड सिक्योरिटी, पॉवर्टी दिन ब दिन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, अभी माइग्रेशन जो बता रहे हो, गांव ही गांव माइग्रेट हो रहा है। लद्दाख में ले में ऐसा जो मेन ले सिटी में अब कॉन्फ्लिक्ट होने लगा है वाटर को लेके। पानी की कमी की वजह से कुछ खेत ऐसे माइग्रेट ऐसे बैरन पड़ा हुआ है। अब अपने पड़ोसी से हमारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। तो दिस आर द प्रॉब्लम्स विच आर फेसिंग इश्यूज। जब मैं इश्यूज की बात करते हूँ लद्दाख में ये सब इश्यूज हम फेस कर रहे हैं। बिसाइड दैट डिजीज की जब बात आ रहा है, या अभी बच्चे पानी की पोल्यूशन की वजह से बच्चे मरे हैं, और इसका वाटर पोल्यूशन इज द मेजर कॉज फॉर। ये पंगोंग लेक के पास छुशुल है सर। छुशुल में वहाँ पे छुशुल में 2 बच्चे हैंडपंप के पानी पीने की वजह से मरे हैं। अब वो क्यों मरे हैं पानी की वजह से? क्योंकि जितने भी जो अभी आपने मेरा बायोडाटा में अभी दे रहे थे वर्मी कंपोस्टिंग के वर्मी कंपोस्ट करने का एक इसी वजह से पानी से रिलेटेड होने की वजह से वर्मी कंपोस्ट को अभी आजकल में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत स्ट्रेस दे रही हूँ,
क्योंकि जो डिजीज जो बता रहे हैं वहां पे लद्दाख का टेम्परेचर बहुत लो है, इस गोस -30 टू +30 एंड एक कंपोस्ट बनाने के लिए, प्रॉपर कंपोस्ट बनाने के लिए टेम्परेचर गोस टू +40। तो लद्दाख के पूरे सीजन में इतना नहीं जाता है और जितने भी खाद बनते हैं वो प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं हो पाता है, जिसके वजह से खासकर वाटर पोल्यूशन का एक मेन कॉज है लद्दाख में। एक ई कोलाई का जितने भी खाद जाते हैं वो कंपोस्ट ना हो के खेत में जाते हैं, और अगर वाटर लेवल उसका जो पंप का वाटर लेवल हाई है और उसके वजह से जो पानी सीप होके जाते हैं, और इफ यू टेक दैट वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस देन ई कोलाई की वजह से डिहाइड्रेशन, जॉन्डिस जैसे इश्यूज बहुत सारे अभी डे बाय डे ऑब्जर्व हो रहा है गांव-गांव में, क्योंकि मेरा काम कृषि विज्ञान का हर एक फार्मर्स तक का काम है। तो इस टाइप के इश्यूज ऑब्जर्व किया गया है। इवन अभी जो चुशूल में तो 2 बच्चे का डेथ भी हुआ। दिस इज the turning point for me to start the compost making and boost up the vermicomposting for this region. This is which I feel a solution for Ladakh region. And now next, sir. एंड शायद ये अभी दूसरा वाला स्लाइड हो गया। मैं और एक चीज आपको शेयर करना चाहूंगी 1 मिनट से, इसमें मेरे 2-3 पॉइंट्स मिस हो रहे हैं। बिसाइड दैट, अब जब हम इंडस की बात है, इसमें शायद आपके प्रेजेंटेशन में ये वाला पिक्चर नहीं आया सर, मैं दूसरा प्रेजेंटेशन आपसे शेयर हो गया है। तो इंडस की बात आ रहे हैं तो ज्यादातर अगर लद्दाख से बच्चे हैं तो इंडस सब लोग खुश होंगे कि वी आर हैविंग ए इंडस सिंध नदी, मगर कभी किसी ने इस चीज पे गौर करने की कोशिश नहीं किया। इन ले रीजन 70% ऑफ वाटर वी आर टेकिंग फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस गोज फ्रॉम द इंडस रिवर एंड द इंडस स्टेटस इज जो मेन जो चोगलम सर जगह है, जो वहां पे आज से 2016 से ये चीज देखा गया, वाटर को एनालाइज किया तो वहां पे पूरा गार्बेज का हब था सर, वहां पे गार्बेज का हब। एंड जब पता चला कि ये पानी इट्स गोज टू ड्रिंकिंग पर्पस ऑफ होल ले रीजन, देन I took initiative, फर्स्ट इसका पानी का एनालिसिस किया। इसमें सबसे ज्यादा मार्केट चोगलमसर मार्केट जो पास होने की वजह से पूरा गार्बेज पानी में उसी इंडस में फेंका जाता था। उससे 50 मीटर के दूरी में हैंड पंप से, सबमर्सिबल पंप से उस पानी को लिफ्ट करके पूरा ले में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। मगर अभी जो कि देख के फिर मैंने लेटर लिखा हिल काउंसिल को, वाटर इश्यूज को वहाँ के पिक्चर लेके वहाँ पे देखा गया। We 15 students took the initiative to clean that area. It took 4 to 5 days to clean one small patches of that, and for the solution what I find that to cleaning that area, it's a very big area for clean. Only we 15 people can't do a big change, but the main problem what I observe in that area is इससे पानी तो पोल्यूट हो ही रहा था, जितने भी गार्बेज आ रहे थे पानी में गया हुआ था, साथ में इससे जितने भी फिश कल्चर था जो एक्वाटिक, उस पे बहुत बड़ा थ्रेट था। अभी आपने जो प्रेजेंटेशन देख रहा है इसमें मेरा वो पिक्चर नहीं आ पा रहे, तो इसमें फिश की जो एक्वाटिक जो फिश की जो कंडीशन था, इट वाज हॉरिबल। इतने मुश्किल से पूरा दिन अगर वो एरिया साफ करने के बाद एक फिश मिला, इट वाज इन वेरी पैथेटिक कंडीशन ड्यूरिंग द पॉल्यूशन टाइम। उस जो गंदगी था उसमें पूरा फिश का पूरा फिन्स
पूरा गल चुका था, आंखें पूरे उनके लाल हो चुके थे, ब्लडिंग हो रहा था। इफ यू थिंक पूरा अगर इस कंडीशन में अगर वाटर पोल्यूशन हमारा बढ़ता है, एक्वाटिक लाइफ पे कितना थ्रेट है। और 22 स्पीशीज है इंडस हमारे इंडस रिवर में 22 स्पीशीज के लिए कितना बड़ा थ्रेट है। अगर इस हिसाब से हमारा पोल्यूशन बढ़ता है, खासकर पोल्यूशन में हमारा इंडस्ट्री का वो पोल्यूशन नहीं है, जितने भी जो टूरिज्म गंदगी फेंकते हैं, दुकानें हैं, मैगी का गंदगी है, जितने भी गार्बेज वगैरह है पूरा इंडस में फेंकते हैं। और इंडस में फेंक के फिर उसको कोई ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं है जिसपे हम ये ट्रीट करके पानी को जाए। अभी थोड़ा बहुत हमें उसमें क्लोरिनेशन वगैरह डाल के हमें पानी थोड़ा पिलाया जाता है, मगर इट वॉज इन अ वेरी पैथेटिक कंडीशन। एंड इस पे फिर हमने 2016 पे हम 15 स्टूडेंट ने इस पे ड्राइव किया। 15-16 से एक ड्राइव शुरू हुआ जिसमें हमने एक लद्दाख पीपल मूवमेंट फॉर क्लीन इंडस के एक ड्राइव शुरू किया, इनिशिएट किया। एंड इसमें ऐसे मैंने ये चीज हर एक स्कूल लेवल पे, हर एक कॉलेज लेवल पे, हर एक फार्मर्स को इन सब चीजों को एक जगह इकट्ठा करके एवरी ईयर जून 23 को हमने एक डे रखा गया कि इस इंडस क्लीन ड्राइव कर लेंगे। इसमें किसी का गवर्नमेंट का ये पैसे नहीं है, ऐसे वॉलंटियर मैंने ये काम शुरू किया था। और एवरी 23 जून को ये चीज ऐसे सॉल्यूशन क्लीनिंग ड्राइव का शुरू कर रहे हैं। मगर लास्ट 2 ईयर से हम ये कोविड के चक्कर में इस ड्राइव को शुरू नहीं कर पाया। फिर 16 से हमने अभी 2019 तक का जो ये 18 तक का जो सफर था, 18-19 तक का, 15 से 200-300 पीपल इस मूवमेंट में इकट्ठा लिए। और हम एक 23 जून को एक फिक्स डेट है, हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी का ब्लेसिंग्स रहा, उन्होंने ये कैंपेन को स्टार्ट कराया गया। और इससे हर साल हम एक क्लीनिंग ड्राइव 23 जून को हमने स्टार्ट किया एज ए सॉल्यूशन। बिसाइड दैट लद्दाख के जंस्कर में अब वैसे तो मेरा काम हर लद्दाख के हर गांव और जंस्कर, नुब्रा, चांगतंग इन सब में है, तो कोशिश करती हूँ मैं इसमें छोटे छोटे करके एक क्या क्या इश्यूज हमने दिया वो आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। जंस्कर में अभी सबसे ब्यूटीफुल कुछ 1-2 साल से पूरे टूरिस्ट हब हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो मेन पादुम जगह है, वहाँ पे टोटली दे आर डिपेंड अपॉन स्प्रिंग वाटर। अब सबसे ब्यूटीफुल जगह क्या है जंस्कर में, पादुम का जो स्प्रिंग एक ही पानी का सोर्स है, इट गेटिंग पोल्यूटेड डे बाय डे, क्योंकि विद टूरिज्म से होटलें कुछ नहीं होता, सीधे जितने भी ड्रेनेज है सीधा अपने स्टीम की जो नाला नालियों में उसमें पानी छोड़ दिया जाता है। और इसके वजह से जितने भी वहाँ पादुम से लेके जितने भी उफ्ती तक का जो 4-5 गांव है, दे आर नॉट इन द कंडीशन टू ड्रिंक दैट वाटर। पहले एक टाइम ऐसा होता था वो पानी जो है पीने के लायक होते थे, अभी वो पीने के बिल्कुल लायक नहीं है। अब इस पे क्या सोल्यूशन है, उनको अवेयर किया जाता है कैंपेन करके कि किस तरह से इसको हमने मेंटेन रखना है। गांव में अब महीने में एक बार क्लीनिंग ड्राइव उनका शुरू किया हुआ है। तो अब वैसे ही करगिल की भी जब बात करती हूँ, आज से 2018 की बात है सर, वहाँ पे हमने 32 सैंपल्स वाटर सैंपल चेक किया, जिसमें जो करगिल में हमारा सुरू एक जो रिवर चल रहा है, that was in much better condition than the hand pump which they are uptaking. 32 जो वाटर सैंपल में ज्यादातर इकोलाई का
मात्रा पाया गया। और इसमें से उसी टाइम हमने विद इन आवर 300 फार्मर को हम पीपल ऑफ मेन सिटी ऑफ कारगिल को अवेयर किया, और उसमें पानी को हमने मार्क किया कि कौन कौन से वाटर हैंडपंप पीने के लायक नहीं है। विद इन ए वीक वहाँ का हिल काउंसिल ने उस हैंडपंप जो मैंने मार्क करवाया था वहां पे उन्होंने अभी टैप वाटर आया हुआ है जो स्प्रिंग से टिक छुमिक वहां पे मतलब टिक छुमिक के नाम से वो एक स्प्रिंग चलता है। दैट वाटर इज अ वेरी गुड कंडीशन टू ड्रिंक ड्रिंकिंग पर्पस। दैट वाटर इज यूज्ड फॉर नाउ इन होल Kargil for in a tap water एंड और बिसाइड दैट एक खंगराल एक गांव है जिसमें पानी का सबसे मेन इशू है स्ट्रीम वाटर। स्ट्रीम में क्या हुआ, स्ट्रीम में आर्मी जहां भी रहते हैं एक प्लस पॉइंट भी है, आर्मी हमें सेव करता है। वहाँ एक साइड से आर्मी का एक बहुत बड़ा खासकर वाटर रिसोर्सेज के लिए बहुत बड़ा थ्रेट भी है। अगर थ्रेट की जब मैं बात करती हूँ, क्योंकि जितने भी एरिया है आर्मी के जितने भी यूनिट्स है वाटर रिसोर्सेज के आसपास ही रहते हैं और दे बिल्ड देयर टॉयलेट्स इन फ्रंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और जिसकी वजह से जो चाहे वो चुशुल में हो, चाहे वो चंगतंग में हो, चाहे वो करगिल में हो, हर जगह जितने भी वाटर यूनिट्स पे ही जो वाटर हब पे उनके यूनिट्स हैं और टॉयलेट सिस्टम इस तरह से होता है, उनका ड्रेनेज पूरा जितने भी स्ट्रीम्स वगैरह में जा रहा है। और साथ में वहाँ जो खंगराल एक जो गांव बता रही हूँ जहाँ पे पीने का बिल्कुल पीने का अच्छा नहीं है। ग्राउंड वाटर टोटली माने एल्कलाइन वाटर है, यू कांट टेक दैट वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। और जो स्ट्रीम है जिसमें इनका पूरा आर्मी का जो ड्रेनेज जा रहे हैं उस पे, और साथ में जो स्ट्रीम एक दे आर वेरी हैप्पी, छोटा सा एक स्ट्रीम है वो पीने के लिए लायक है सोच के वो पी रहे थे, मगर उसमें जब चेक किया उसमें लीच पड़ा हुआ था। वो लीच के जो इट वॉज वेरी डेंजर, अगर स्टोमक में चला गया और अगर बॉडी पे आ गया तो वो दे सक द पूरा ब्लड को। तो इस टाइप के वाटर इश्यूज, वाटर बोर्न डिजीज इस एरिया में पाया जाता है। कारगिल में सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस का भी बहुत बड़ा इशू है। डिहाइड्रेशन का बहुत बड़ा इशू है, हेपेटाइटिस का बहुत बड़ा इशू है। दिस इज द causes of this, all are the waterborne disease which I observed when I was in a field. And beside that एक मिनट सर अभी। बिसाइड दैट अब मैं सॉल्यूशन की बात जब करती हूँ तो अभी एग्रीकल्चर का अगर हम बात करते हैं तो अभी डॉक्टर परवीन साहब ने भी बहुत अच्छी चीज बताया जो ड्रिप इरिगेशन की बात कर रहे हैं। लद्दाख में एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अभी वाटर का जो मेन अभी पॉलिसी बन गया है, उसमें 55% हमारा ड्रिप इरिगेशन पे सब्सिडी चल रहा है। अब गवर्नमेंट दे आर टेकिंग वेरी मच इंटरेस्ट टू गिव ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन फॉर दिस सॉल्यूशन। बिसाइड दैट अब इसका एक जिस तरह से ग्राउंड वाटर हमारा निकाला जा रहा है, जिस स्पीड से हम निकाल रहे हैं, ये मोर देन आज से 3 साल पहले इन ए रिकॉर्ड 2000 हैंड पंप्स अभी रिकॉर्ड किया गया हुआ है। मगर एक आज से 2 साल पहले एजेंसी 7 एजेंसी था जो वाटर जो सबमर्सिबल पंप निकालते हैं, उनका एक टारगेट होते हैं कि साल में 200 हैंड पंप निकालना।
आप सोच सकते हैं लद्दाख जैसे कंडीशन में जहाँ पे हमारा मेन जो सोर्स है वाटर इरिगेशन के लिए ग्लेशियर वाटर पे हम डिपेंड है। ग्लेशियर इज रिट्रीटिंग लाइक एनीथिंग, हर 25 मीटर पर ईयर के रेट से वो रिट्रीट हो रहा है। तो लद्दाख में और दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय ग्लेशियर वाटर के। आप जिस तरह से हम पानी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ग्राउंड से भी, जो टोटली जो वाटर रिसोर्सेज जो नॉर्मली है उसको तो हम पोल्यूट करके आने वाले फ्यूचर के लिए इट बिकम वेरी थ्रेट। अभी अलार्म शुरू हो चुका है किस तरह से वी आर स्केयर्ड कि आने वाला फ्यूचर कहीं रेगिस्तान जैसा तो नहीं होगा, क्योंकि अगर इफ वी कांट कंजर्व, इफ वी कांट थिंक ओवर इट, तो इट बिकम वेरी कम्स लद्दाख इन ए वेरी थ्रेट जोन। और बिसाइड दैट अभी प्लांटेशन पे अभी जोर देने की बहुत जरूरत है। वैसे पहले लद्दाख में अब एग्रीकल्चर की जब पहले लद्दाख में ट्रेडिशनल जिंक हुआ करता था, जो अभी नॉर्मली farmers they don't keep zinc. Zinc is the pond in earth pond, खासकर ले जितने गांगलेस से लेके स्कारा तक हर एक घर में एक छोटा छोटा पॉन्ड होता था एज ए वाटर रिचार्ज, जो कि अभी फार्मर्स दे आर नॉट यूजिंग दैट जिंक सिस्टम। और इसके मुझे लगता है कि ऐसे सॉल्यूशन जिंक को फिर से रिवाइव करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जिंक अगर रखेंगे तो इससे एक तो पहला ग्राउंड वाटर रिचार्ज बहुत अच्छे से हो जाते हैं और इनके ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गए, और साथ में प्लांटेशन को लगाने की सॉल्यूशन के फॉर्म में प्लांटेशन भी साथ हो तो सबसे बढ़िया इसका वाटर ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में इट बिकम वेरी हेल्पफुल। और बिसाइड दैट अभी मेरा एक स्टडी हुआ था जो जिंक पे था, जिसमें पॉन्ड लाइनिंग पे मैंने ये स्टडी किया था। अगर पॉन्ड लाइनिंग के जो माइक्रोफिल्म अगर अच्छा वाला क्वालिटी अगर हम यूज करते हैं, इट सेव 90 to 95% वाटर इसका सेव करते हैं ऐसे वाटर स्टोरेज। और जिसमें से हमने वाटर स्टोरेज की जब बात करते हैं कि वाटर को हमारा सीपेज लॉस से हमें बड़ा वो करते हैं। और इस अगर पॉन्ड लाइनिंग में करेंगे इसमें फिशिंग का भी एंटरप्रेन्योर की जब हम बात कर रहे हैं तो एक फिशिंग बहुत अच्छा इसका पर्पस है। और ये अगर पॉन्ड लाइनिंग हमारा 10 साल तक अगर ये चल सकता है, अकॉर्डिंग टू डेप्थ इसकी पॉन्ड लाइनिंग की थिकनेस होनी चाहिए। जिस तरह से पॉन्ड लाइन अगर किस हाइट के हिसाब से इसकी थिकनेस वेरी करता है। और लद्दाख में अगर जहाँ पे सैंडी सॉइल की इश्यूज है, जहाँ पे पॉन्ड नहीं बना सकते हैं, जिंक नहीं बना सकते, हम यहाँ पे हम ये सजेस्ट करते हैं इसको पॉन्ड लाइनिंग की जरूरत है, पॉन्ड लाइनिंग करने की जरूरत है। और ये बिसाइड दैट अभी फार्मर्स को एग्रीकल्चर के लिए हम मोटिवेट करते हैं मल्चिंग टेक्नोलॉजी, जो कि एक बहुत अच्छा सस्ता और टिकाऊ फार्मर्स के लिए हम बताते हैं। मल्चिंग टेक्नोलॉजी क्या चीज है जो देखेंगे लद्दाख के लिए। वैसे तो मल्चिंग कैन बी ऑफ एनीथिंग, ग्रास का भी हो सकता है, पेपर का भी हो सकता है, लीव्स का भी हो सकता है, जो कि हमारे वाटर की वाटर जो वाटर कंजम्पशन को कम करता है। मगर लद्दाख में अभी टेक्निकली हम ज्यादातर ब्लैक मल्चिंग की हम बात करते हैं। जो ब्लैक मल्चिंग में क्या होते हैं, जिसमें इसमें पानी की सेविंग तो होती है, साथ में इसकी यील्ड बहुत अच्छी आती है। लद्दाख का टेम्परेचर इसका टेम्परेचर बहुत वेरिएशन है, जिसकी वजह से अगर हम ब्लैक मल्चिंग हम यूज करेंगे यील्ड में बहुत अच्छा मुनाफा है। इसको हम टोमेटो और ब्रिंजल टोमेटो और जो हमारे कालीफ्लावर, इन सब पे हम बहुत अच्छा वो होता है। बिसाइड दैट अभी रिसेंटली इस पे पोटैटो पे मैंने 3 साल से इम्प्लीमेंट कर रही हूँ।
और जो लद्दाख से हैं उनको पता है इंडस बेल्ट पे पोटैटो बहुत बुरी अच्छी से इनका प्रोडक्शन नहीं होता है। तो इंडस बेल्ट में क्योंकि वहाँ पे क्ले कंटेंट बहुत ज्यादा है, जो क्ले कंटेंट में अगर पोटैटो अगर लगाएंगे तो वो उसका जो क्रॉप यील्ड इतना अच्छा नहीं आता है। तो मल्चिंग को हमने एक रिसर्च इस पे किया था कि मल्चिंग यूज करके हमने पोटैटो यूज करके इसका वाटर कंजम्पशन भी बहुत कम हुआ, साथ में इसका यील्ड बहुत अच्छा है। बिसाइड दैट अभी आंचुक साहब कांचुक ने आइस स्तूपा बनाए हैं, ये सब बहुत अच्छा सोल्यूशन है लद्दाख के लिए वाटर को मैनेज करना, वाटर को कंजर्व करना। और ये तो बहुत वास्ट अगर पॉलिसी लेवल पे हमें करने की जरूरत है, मगर फार्मर जब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के लिए हमें देखना है तो एक मल्चिंग टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट एक ऑप्शन बताए जाते हैं। और साथ में जैसे अभी आपसे हमने बात किया था कि वाटर से ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या लिंक है, वो आपको मैंने पहले बताया। बच्चे को डेथ होते हुए देख के फिर ये इनिशिएट वर्मी कंपोस्ट लद्दाख में किया था मैंने। फ्रॉम लास्ट 2015 से मैंने इस पे रिसर्च शुरू किया, क्योंकि प्रॉब्लम्स सिर्फ वहाँ के सॉइल की क्वालिटी पे नहीं था, वाटर इश्यूज पे बात चल रही थी। तो वाटर इश्यूज के लिए मेरे लिए एक इट बिकम ए वेरी बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ मी कि वाटर को कैसे, खासकर वाटर पॉल्यूशन को कैसे स्टॉप करना है। तो वाटर पॉल्यूशन का एक बहुत अच्छा वो है, अगर कंपोस्ट को वर्मी कंपोस्ट हो या कंपोस्ट को प्रॉपरली डिकम्पोज किया जाए तो इससे ना कोई केवल वाटर की क्वालिटी हमारा मैनेज हो सकता है, साथ के साथ में सॉइल की हमारी क्वालिटी भी बहुत अच्छे हो सकता है। अगर आज इतने पेंडेमिक कंडीशन में एक चीज हमारा सबसे बड़ी वो लगता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कितना इम्पोर्टेंट है, साथ में ऑर्गेनिक सब्जियां खाना कितना जरूरी है। तो इन सब चीजों को देख के फिर पर्टिकुलर मैंने वर्मी कंपोस्ट पे पूरा 2015 से इस पे रिसर्च किया। अभी बहुत अच्छा इसका बिजनेस चल रहा है, फार्मर्स को इस पे ट्रेनिंग्स दिया जाता है। इससे न केवल सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ रहा है और साथ में वाटर की क्वालिटी अब इम्प्रूव हो रहा है और फार्मर्स दे आर वेरी हैप्पी। अभी ज़ांस्कर, नुब्रा, चांगतांग हर जगह वर्मी कंपोस्ट को एक्सप्लोर कर रही हूँ। इस 2015 से अभी 4-5 साल से इसी पे वर्मी कंपोस्ट पे मेरा फोकस है और साथ में वाटर का मेरा साथ में चलते हैं कि इस पे वाटर क्वालिटीज को कैसे इम्प्रूव करना, इनको अवेयर करना, क्योंकि मेरा ज़्यादातर जॉब प्रोफाइल फार्मर्स से रिलेटेड है। तो फार्मर लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे मुझे ज़्यादा काम करने को काम मिलते हैं। तो इस तरह से वाटर सेविंग की कोशिश कर रही हूँ और आप सब भी मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सेफ वाटर सेफ लाइफ, क्योंकि वाटर है तो सब कुछ है, वाटर नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इसी साथ से मैं आप सबको पेशेंटली मुझे सुनने के लिए मैं बहुत थैंकफुल, क्योंकि अभी इसमें आपको प्रेजेंटेशन जो मैं शेयर करना चाह रही थी जो वो शायद आपको शेयर नहीं हुआ, दूसरा प्रेजेंटेशन मेरा शेयर हुआ, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर जिगमेत फॉर जॉइनिंग अस। आपने बहुत अच्छे तरह से हमें अवगत कराया कि लद्दाख में एक्चुअल में क्या इश्यूज है। आपने बताया कि जल ही जीवन है और वाटर कंजर्वेशन के बहुत से तरीके बताए आपने रियल तकलीफों को छुआ कि कैसे विलेज के विलेज माइग्रेट कर रहे हैं पानी की कमी के कारण और वाटर रिसोर्सेज कितने फास्ट डिप्लीट हो रहे हैं पर्टिकुलरली लद्दाख में। वैसे ये मैडम ये कंसर्न है पूरे देश का कि वाटर रिसोर्स बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं, बट चूंकि लद्दाख इज हाई टेरेन हाई ऑल्टीट्यूड रीजन, वहाँ ये ज़्यादा मैटर ऑफ कंसर्न है। और कैसे जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो आज सैलाइन या बैरन लैंड में कन्वर्ट हो रही है। और आपने बताया कि कैसे टूरिज्म भी एक उसके अंदर एक कारण है।
कि जो बहुत ज़्यादा टूरिज्म है वो इनकम या जीडीपी में तो हेल्प करता है, पर साथ ही साथ जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको बहुत एक्सप्लॉइट करता है, और किस तरह पानी की कमी से डिजीज या डेमोग्राफिक चेंजेस देखने को मिल रहे हैं लद्दाख में, वो मैटर ऑफ कंसर्न है। और मैडम हम सराहना करते हैं आपके प्रयासों की कि आप हर साल 23 जून को एक कैंपेन चलाते हैं नदी की सफाई के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके प्रयासों के लिए कि आप सफल हो मैडम। और इसी के साथ थोड़ा सा हम लेट हैं मैडम, इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर ज़िगमेट टू आंसर द क्वेश्चंस इन चैट बॉक्स, बिकॉज वी कैन नॉट टेक क्वेश्चंस बिकॉज वी आर रनिंग लेट and next speaker is waiting. So I would request Dr. Zigmet to answer the question in chat box. With that, thank you very much, ma'am. Now, since we talked about some problems of Ladakh, Dr. Parveen raised some really critical issues in Ladakh, and then Dr. Zigmet also talked about the problems in Ladakh. Now there is a person who have the solution for all these problems. You know, this particular speaker is very close to me, and his technology particularly fascinates me. So I request Mr. Ramesh Soni to join us. Dr. Ramesh Soni. Dr. Ramesh Soni is a co-founder and CEO of Vayujal Technologies Private Limited. He has done his master's from IIT Madras. He is currently working for the development of system for supplying drinking water at IIT Madras using Vayujal Technologies. So I request Dr. Ramesh to please switch on his camera and microphone and present his work. I believe you all can see a solution in Dr. Ramesh's presentation for Ladakh. Over to you, Mr. Soni, Dr. Soni. Thank you so much. It is nice speaking with the SK team again. So my name is Ramesh. I have a correction in what Dr. Chandra said. I'm yet to be doctor. I'm still Mr. Okay, so I will just briefly speak about what we do, and it can be a solution for Leh and Ladakh region for some situational conditions. May not be all, as I'm not aware of the exact situations there, but I would present my technology, and that would give us some idea to the people, or probably to listeners, that how that can be further utilized in the same form, or further we can build upon that to make it useful for people of Leh and Ladakh. So I'll just share my presentation and quickly take you through. So I hope my screen is visible to you. Yes, but is my screen visible? Yes, your screen is visible, but you need to select the right window for the sharing the content. You need to open your PPT first. Okay. You need to open your PPT first and then select the window. You. Yes. Okay, I hope this is visible now. Yes. You can go to PPT mode and yes. Okay, thank you. Yes. So I hope full screen is coming to everybody. Yes, it's coming. And so this is like I will speak about Vayujal. We are a small company incubated at IIT Madras and ISO certified company. I'm sure speakers before me might have given you a good amount of idea. But this is just again I'm repeating probably on the statistics about water availability. और अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो comfortable रहेगा सबको? Can that please कोई confirm कर दो? Because I was seeing yesterday कि हिंदी में बात कीजिए, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करता हूँ आज. तो ये जो है मिक्सचर है, मिक्स लैंग्वेज में बात कर सकते हैं और आपका स्क्रीन विजिबल है, प्लीज. थैंक यू. तो ये जो ग्राफ मैं दिखा रहा हूँ ये है कि धरती पे अपने अर्थ पे कितना वाटर अवेलेबल है. मोस्टली आप देखो तो 97.5% वाटर ये ओशियंस में, सलाइन लेक्स में, सलाइन फॉर्म में लॉक्ड है, उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं. ओनली 2.5% इज अवेलेबल टू अस. और उसके अंदर भी काफी सारा ग्लेशियर्स के अंदर एक परमानेंट सेल बन के लॉक्ड अप है.
और जो ग्राउंड वाटर है वो 30.1% है, और 0.4% वाटर है वो सरफेस या एटमॉस्फेयर में है, जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके अंदर है। अब उस अपन सरफेस या 0.4 को और ब्रेकअप करके अपन देखें तो जो 9.6% है ये पानी पूरा का पूरा धरती पे नहीं है, धरती के वातावरण में है। मीन्स कि जो हमारे आसपास की हवा है इसके अंदर ये 9.6% वाटर है। बेसिकली अगर इसको मैं लीटर्स में बोलूं तो ये पानी है 1 मिलियन 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 लीटर्स। और अगर इसको मैं अगर धरती पे रहने वाले इंसानों से डिवाइड कर देता हूँ तो लगभग हर इंसान के लिए हमारे पास 1 मिलियन लीटर मिनिमम, अगर मैं बहुत रफली बोल रहा हूँ, 1 मिलियन लीटर पीने का पानी हमारे वातावरण में है। तो हम क्या करेंगे, तो ये एक आपको मैं मैप दिखा रहा हूँ। इसमें क्या है कि ये आपको इंडिया का मैप दिख रहा होगा यहाँ पे, ये साउथ अफ्रीका है। तो बेसिकली ये है हवाई, तो ये ग्लोबल एयर करंट्स बोलते हैं, जो ग्लोबली हवा चलती रहती है और सर्कुलेट करती है अर्थ को। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो ये नमी है हमारे समुद्र से वो उठ के हमारे जो लैंड एरिया है, धरती का एरिया, वहां पे आती है। तो आप देखोगे जो राजस्थान वाला एरिया है या फिर तमिलनाडु एरिया है, तो इन दीज एरियाज वी हैव प्लेंटी ऑफ ह्यूमिड एयर करंट, नमी से भरी हुई हवाएं आ रही है। इस एरिया में जैसे तिब्बत का रीजन है काफी कम है, लेह लद्दाख में भी थोड़ा कम है बिकॉज हिमालय आ जाता है, बट फिर भी जो हमारी हवा है उसमें हमेशा ही नमी होती है। एक प्रूफ इस चीज का ये है कि अगर हवा में नमी नहीं होती तो हम सांस नहीं ले पाते, हम ड्राई, एकदम सूखी हवा, हमारे लंग्स बने नहीं है एकदम सूखी हवा के लिए। जो हमारे फेफड़े उनमें हमेशा नमी की हवा ही जाती है, तो हमारी हवा में हमेशा एक नमी रहती है। अब उस नमी को क्या कर सकते हैं कि अगर हवा में नमी है तो ये मैं आपको एक पौधा दिखा रहा हूँ, ये है केकटाई का प्लांट, नागफनी बोलते हैं हम हिंदी में इसको। और मेरा उम्मीद है कि काफी लोगों ने इसके बारे में पता होगा कि नागफनी का पौधा क्या होता है। बहुत कांटेदार होता है, अगर एक बार चुभ जाता है तो बहुत प्रॉब्लम करता और इरिटेशन देता है हमको। तो ये नागफनी का पौधा क्या करता है, ये एक बहुत ही वाइल्ड स्पीसी बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा जो कहीं पे भी लग जाता है। इसको आप साल में 3-4 बार पानी दोगे तो चलेगा, वरना ये अपने आप को पानी दे लेता है। मैं क्या मतलब है कि अपने आप को पानी दे लेता है कि अगर इसको ऐसे वातावरण में हम लगा दे जहां पे नमी है, मतलब हवा में पानी है, नमी है, तो ये रात में जैसे ही तापमान कम होता है तो इसके सरफेस का तापमान भी थोड़ा कम हो जाता है, वातावरण से ज्यादा कम नहीं होता। बट ये बेसिकली फायदा इस चीज का उठाता है कि जो इसके सरफेस रहते हैं, जिसपे कांटे रहते हैं, जो कांटे की टिप होती है उन पे न्यूक्लिएशन स्टार्ट हो जाता है पानी का। बेसिकली जैसे हम बोलते हैं ना कि छत के ऊपर एक वेरी नुकीली चीज रख दो ताकि अगर बादल का कोई करंट आता है तो वो उस पे कैप्चर कर लेगा। वैसे ही यहाँ पे हो रहा है कि जो नुकीली सरफेस है इस पे पानी का जो एयर मॉलिक्यूल है, जो वाटर मॉलिक्यूल है, सॉरी, जो पहला वाटर मॉलिक्यूल, उनका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। और कंडेंसेशन स्टार्ट होकर एक बड़ी ड्रॉप बनता है, और जैसे बड़ी ड्रॉप बनता है जो ये डायमीटर में जो चेंज आ रहा है, हमारा जो व्यास बदल रहा है इस कांटे का, उसके अकॉर्डिंग ये पानी अपने आप जैसे जैसे व्यास बढ़ता चला उसकी तरफ चलता जाता है। और अंत में क्या, इस पौधे के जड़ में आके पानी आ जाता है। यहाँ से फिर ये और नीचे जाएगा, कांटों की ग्रुप के जड़ से लेके फिर पौधे की जड़ में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये पौधा एक ऐसा है जो अपने आप को पानी देता रहता है। और हम क्या करते हैं कि इसी सरफेस को जो दिखा है, कांटेदार सरफेस है, इसको हम एक ठंडी सरफेस पे बना देते हैं। अब बेसिकली आप कोई भी सरफेस को ठंडा करते हो तो उस पर कंडेंसेशन होता है, उस पर पानी जमना स्टार्ट हो जाता है। हम अगर जूस का ग्लास पीते हैं तो उसके बाहर पानी ठंडा होता है, जूस का ग्लास हो गया है। फिर अगर बहुत जोर से एसी चल रहा है, लेह लद्दाख में नहीं होगा शायद, ऐसा बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को नहीं मिलता होगा, बट अगर बहुत जोर से एसी चलता है जहाँ पे बहुत ह्यूमिड एरिया है तो पानी अपने आप कंडेंसेशन होने लग जाता है। तो बेसिकली कोई भी ठंडा सरफेस होता है उस पे पानी अपने आप कंडेंसेशन होता है। और हम क्या कर रहे हैं कि ये एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं, फ्रिज का सिस्टम है बेसिकली, आप बोल सकते हो एक एसी का सिस्टम है। तो ये एक बेसिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जिसमें हम एक कॉइल को, हीट एक्सचेंजर कॉइल को ठंडा करते हैं।
अभी इस हीट एक्सचेंजर कोयल पे हम ये जो केकटा नागफनी वाला सरफेस है वो लाके लगा देते हैं, तो हमें क्या मिलता है इससे कि आप कंडेंसेशन कर रहे थे, ठंडा सरफेस था उस पे, बट जैसे ही नागफनी वाला सरफेस आता है आपका कंडेंसेशन रेट फास्टर हो जाता है, तो आपको सेम सरफेस पे ज्यादा पानी मिलता है, कम बिजली लगती है। तो हम इसी सिस्टम को यूज करते हैं, बाहर से ठंडी मतलब जो ह्यूमिडिटी वाली एयर है उसको लिया, ये हीट एक्सचेंजर कोयल है, इससे पास किया, उसके बाद यहाँ से पानी कलेक्ट हुआ, उसको स्टेनलेस स्टील के टैंक में कलेक्ट करेंगे। ये जो ठंडी हवा इसको वापस जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो हॉट वाला सरफेस है उस पे फेंकेंगे, ताकि ये जो ठंडी हवा है इसकी एनर्जी को वापस रिसाइकिल कर पाए। उसके बाद ये हॉट एयर होगी, उसको एटमॉस्फेयर में वापस छोड़ देते हैं। इस सिस्टम को यूज करके हमने 5 स्केल के सिस्टम बनाए हैं, जो एक दिन में 35 लीटर से लेके 2000 लीटर पर डे तक का पानी दे देता है। अगर वातावरण में 30% टेम्परेचर होता है या 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है एंड 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, इन दैट केस ये आपको 200 लीटर पानी दे देता है, ये 1000 लीटर पानी दे देता है। बेसिकली इस मशीन के अंदर क्या होता है कि आपने फ्रेश ह्यूमिड एयर लिया, उसको एक एयर फिल्टर पे डाल के उसे एयर फिल्टर से पास किया, तो रिमूव की कोई पार्टिकुलेट मैटर है, कोई गंदगी है, छोटा कण है, उसको हटाने के लिए उसके बाद जो हीट एक्सचेंजर कोयल दिखाया था पीछे का स्लाइड में, उस पे डाल के पानी निकालते हैं और उस पानी को फिल्टर करके पीने के लिए ग्लास में भर के दे देते हैं मिनरल वाटर के फॉर्म में। तो ये 7 स्टेज ट्रीटमेंट वाटर यूज करते हैं। तो वो ये है कि हम पहले ओजोन का ट्रीटमेंट करते हैं, सेडिमेंट फिल्टर का ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद एक कार्बन ब्लॉक होता है और एक ग्रेनुलर कार्बन होता है, उसके बाद हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से ट्रीटमेंट करते हैं, फिर पानी में मिनरल ऐड करते हैं, फिर एक यूवी ट्रीटमेंट करते हैं। तो यूवी ओजोन बेसिकली क्या करता है कि कोई भी ऑर्गेनिक या इम्प्योरिटीज होती है उसको डिसइंटीग्रेट करता है, पानी को ऑक्सीजन रिच रखता है, फ्रेश रखता है। 5 माइक्रोन सेडिमेंट फिल्टर होता है, पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर देता है। दोनों कार्बन ब्लॉक होता है, वो डिजोल्व ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हुआ, बगल में कोई मोटरसाइकिल चल रहा था या बगल में कॉफी की दुकान है, तो जो स्मेल होती है, स्मेल बेसिकली हमें एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की वजह से हम सेंस कर पाते हैं, तो वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो पानी में आ जाता है उसको हटाने के लिए है, ये पानी का टेस्ट अच्छा करने के लिए। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो होती है ये 10 नैनोमीटर से बड़ा कोई भी इम्प्योरिटी है साइज के अंदर, उसको हटा देती है। कोरोना वायरस हुआ, बैक्टीरिया का वायरस हुआ, जो मैडम इकोलाई का बोल रही थी, इकोलाई का वायरस हुआ, या कोई इकोलाई का बैक्टीरिया हुआ, या कोई और वायरस हुआ, तो जो भी ये वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन जो भी होता है उसको फिजिकली रिमूव कर देता है, पानी में मिनरल ऐड करके पीने लायक बना के। एक बार और ये बायोसाइडल ट्रीटमेंट होता है, यूवी लाइट से माइक्रोबाइल मर जाते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट करके प्योर हेल्दी वाटर डिस्पेंस करते हैं, जो भारत सरकार का BIS का ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड है उससे मैच करता है। अभी ये मशीन का अभी क्या स्कोप है कि इस मशीन को हम 20 डिग्री से 42 डिग्री वाले तापमान में चला सकते हैं। अगर इसको थोड़ा एक्सटेंड करें तो 18 डिग्री से 42 डिग्री तक कर सकते हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेंज रहता है 25 से 99%। इस सिस्टम के अंदर ये मशीन आराम से पानी प्रोड्यूस कर देती है। तो बहुत सारे मशीन, जो 5 मशीन है उनमें से एक मशीन का मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक बात करूंगा। ये मशीन है 14 किलोवाट का पावर रेटिंग है और साइज एक स्पेसिफिक साइज है, लगभग 1000 किलो वेट है, और एयर प्योरिफिकेशन, वाटर प्योरिफिकेशन हमने डिटेल में देखा पहले। तो ये मशीन क्या करती है कि 0.3 किलोवाट से कम पावर लेते हैं 1 लीटर पानी बनाने के लिए। और ये जो स्लाइड है इसमें मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे इस मशीन से आउटपुट बदलता है, क्योंकि जो हमारा वातावरण होता है उसमें हमारे बहुत सारे ऋतुएं होती है, सीजन्स होते हैं। तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, जो नमी है और तापमान, टेम्परेचर है, वो बदलता रहता है। तो ये आप देखोगे तो ये एक डेटा है लद्दाख का। लद्दाख में नमी बहुत है, लाइक ये डेटा ले का है, ये डेटा लद्दाख का है। आप देखोगे तो नमी काफी ज्यादा रहता है हर महीने, बट अगर आप टेम्परेचर प्रोफाइल देखोगे तो ये जनवरी में -5 से लेके जुलाई के अंदर आता है 25।
तो ये कुछ महीने का एक विंडो मिलता है हमें, जहाँ पे क्या होता है कि पानी की कमी भी होती है और ये मशीन भी अच्छे से ऑपरेट कर पाती है। ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने का विंडो है जिसमें ये मशीन लेह लद्दाख का रीजन है, जो कोल्ड रीजन है, उसमें आराम से चल पाती है। बाकी दिन के अंदर भी क्या होता है, जैसे अगर अपन फरवरी की बात करें या मार्च अप्रैल की बात करें, तो जो एवरेज मंथली एवरेज टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। इसमें भी क्या होता है कि पूरे दिन और रात 10 डिग्री तापमान नहीं रहता है। दिन में थोड़ा तापमान ज्यादा जाता है, रात में तापमान कम जाता है। मान लीजिए कि दिन में 20 डिग्री चला गया और रात में 0 डिग्री चला गया, तो एवरेज आता था 10 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे दिन में 20 डिग्री तापमान चला गया, उन कुछ घंटों के लिए इवन अप्रैल महीने के अंदर हम इस मशीन से पानी बना सकते हैं। और अगर अपन इस रेंज को एक्सटेंड कर देते हैं तो ये मशीन और ज्यादा टाइम तक हम लेह लद्दाख के रीजन में ऑपरेट कर पाएंगे। अभी ये टेबल है जो बताती है कि जब टेम्परेचर कम होता है तो मशीन कैसे पानी बनाती है, और नमी कम होती है ज्यादा होती है तो कैसे पानी बनाता है। तो इस टेबल में आप देखोगे जितनी ज्यादा नमी होता है उतना ज्यादा पानी प्रोड्यूस होता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है उतना ज्यादा पानी भी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि नमी तो सीधा सीधा बताता है कि जितनी ज्यादा नमी उतने ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल, उतना ज्यादा पानी हम कलेक्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर क्या बोलता है कि जितना ज्यादा पानी का तापमान उतने ही ज्यादा उस हवा की नमी को होल्ड करने की क्षमता होती है। जैसे तापमान कम हुआ, हमें फॉग दिखाई देने लग जाता है। बेसिकली क्या होता है कि हवा पानी छोड़ रही होती है अपने अंदर से, तब फॉग बनता है। तो जितना ज्यादा तापमान उतना ज्यादा पानी हम निकाल सकते हैं। तो हम अगर बात करते हैं एक कॉलम की 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर इस मशीन को हम ऑपरेट करते हैं, जो लद्दाख का एवरेज अगर क्लाइमेट मानते हैं कुछ महीनों के लिए या कुछ आवर्स के लिए पर्टिकुलर महीने को, तो उसमें अगर 40 डिग्री सेल्सियस 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी से जब हमने देखा कि नमी काफी रहता है, तो मिनिमम 40 डिग्री मान के चले और मैक्सिमम 90 डिग्री मान के चले, तो ये 1000 लीटर पर डे मशीन हमें एक दिन में 24 घंटे ऑपरेशन करने के बाद ये पानी मिलता है हमें 357 लीटर से लेके 1181 लीटर तक का पानी दे सकती है। अब अगर ये जो पानी जो पैदा हुआ है इसको हम फार्मिंग में अगर यूज करना चाहते हैं, तो ये जो पानी है इसको हम किसी भी तरीके से ट्यून कर सकते हैं, पीने के पानी में कन्वर्ट करने के लिए या कोई लेबोरेटरी में पानी के काम के लिए, क्योंकि पानी का जो यूज होता है वो डिपेंड करता है कि उस पानी की क्वालिटी क्या है। अगर हमें फार्मिंग के लिए भी करना है तो हमें पानी को ट्यून करने की जरूरत है ही नहीं। हमें जैसा पानी मिला डायरेक्टली पाइप डाल के, जो मशीन के नीचे टैंक है उनसे पाइप डाल के आप ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम कर सकते हो। तो खेत में कहाँ कहाँ पे ये पानी लिया जा सकता है, जहाँ पे नदी या नहर का पानी नहीं आ रहा, जहाँ पे बारिश का पानी नहीं है, तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं कि जो क्लीनिंग और वाटरिंग, जो लाइफ जो हमारी घास है, जो हमारी जो पैदावार है उसको साफ कर सकते हैं, उसको पानी दे सकते हैं। जो खेत में रहने वाले लोग हैं उनके लिए पीने का पानी हम बना के दे सकते हैं। जो वहाँ पे खेतों में जो घर है हमने बनाए हुए, वहाँ पे डोमेस्टिक यूज के लिए पानी का, पीने के पानी के काम में ले सकते हैं और कोई काम में भी ले सकते हैं। तो जितने भी फार्म्स के अंदर घर होते हैं उनमें ये पीने का पानी के लिए दे सकते हैं। इनसे हम ड्रिप इरिगेशन के सिस्टम से पर्टिकुलर क्रॉप्स को यूज कर सकते हैं। अभी मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, तो मैं ये मैं बता नहीं, ये सजेशन दे नहीं पाऊंगा कि कौन से पौधे होते हैं या कौन सी पैदावार होती है जिसको हम कम पानी के साथ या ड्रिप इरिगेशन के साथ अच्छे से पैदावार कर सकते हैं। जैसे केसर की खेती हो गई, तो उसमें एक छोटा पौधा हुआ तो उसको ड्रिप इरिगेशन से पानी दे सकते हैं, केसर का दाम भी अच्छा होता है। तो वैसे कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स में, स्पेसिफिक केसेस के अंदर ये पानी हमारे खेती के काम में आता है। उसके अलावा जो अनएक्सपेक्टेड मतलब एकदम पानी हुआ ही नहीं कहीं पे, जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं एरियाज के अंदर जहाँ पे
स्प्रिंकलर यूज करते हैं, तो अगर वैसे कहीं पे अनएक्सपेक्टेड जो पानी एक्सपेक्टेड था आना नेचुरल सीजनिंग की वजह से, बारिश की वजह से वो नहीं आता, तो उन केसेस के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, ये मशीन को लेके गए, पानी प्रोड्यूस किया, वाटरिंग के काम में लिया, एंड देन वी ब्रिंग इट बैक, और वी कैन प्रोड्यूस वाटर फ्रॉम सम अदर एरिया एंड देन ट्रांसफर वाटर, और वी कैन इंस्टॉल अ मशीन इन द फार्म फॉर एवर और यूज कर सकते हैं। मशीन का लाइफ क्या है, 15 साल, अगर कंटिन्यूसली 15 साल हम चलाएं तो एक मशीन 15 साल तक की है। तो ये एक सॉल्यूशन है जिसको मैंने आपको कुछ केसेस के अंदर थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा खेती की जो विशेषज्ञ है या खेती के जो एक्सपीरियंस है वो हम उसको आगे और सोच सकते हैं कि कैसे इसको और काम में बढ़िया तरीके से लिया जा सकता है। बट ये एक सॉल्यूशन है जो हमारे पास आज अवेलेबल है, और हम आईआईटी में हैं और ये कुछ ग्रुप्स हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, एंड वी वुड लाइक टू थैंक देम आल्सो। और अब कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिक तो मैं आई वुड लाइक टू टेक दिस क्वेश्चन, प्लीज मुझे क्वेश्चन पूछिए अगर टाइम परमिट करता है तो। हाँ, थैंक यू। थैंक यू रमेश फॉर द क्रिस्प प्रेजेंटेशन। आपने अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत ही बेहतरीन तरह से रखा हम सबके सामने। कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं पढ़ूंगा आपके लिए कि जैसे ये कि 1000 लीटर की जो मशीन है उसकी कॉस्ट क्या आती है, या वो कितनी बिजली कंज्यूम करती है एक दिन में, और एक ओवरऑल कॉस्ट क्या निकल के आती है अगर मुझे 1000 लीटर की मशीन मैं घर में लगाता हूं तो। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन हैं। और ये फिल्टर्स क्या फिक्स होते हैं या आप चेंज कर सकते हैं, जो आपने बताया फिल्ट्रेशन के लिए? ओके, तो ये जो सिस्टम है, जैसे 1000 लीटर पर डे के सिस्टम की अपन बात करते हैं, तो ये लगभग मशीन का कॉस्ट 10 लाख रुपए पड़ता है। प्लस हम हर 1 लीटर पानी जो बनाते हैं मशीन से, उसके लिए हम 0.3 यूनिट बिजली का देना पड़ता है। मान लीजिए हमने मशीन लिया 10 लाख रुपए देके, उसके बाद हम मशीन को घर पे लेके आके हमने जहाँ पे इंस्टॉल किया है, तो मशीन से 1 यूनिट बिजली अगर अपन सप्लाई करते हैं तो 3.3 लीटर पानी मिलेगा हमको। अब वो डिपेंडिंग ऑन कि हमारा पावर सप्लाई कहाँ से आ रहा है, पावर सप्लाई का रेट क्या है, तो वो हम अगर कहीं पे 2 रुपए पर यूनिट है या कहीं पे 10 रुपए पर यूनिट है, तो उसके अकॉर्डिंग वो 60 पैसे से 6 रुपया हो जाएगा। और अगर मान लो 10 रुपया है तो 1 लीटर पानी के लिए हम 3.3 रुपया दे रहे हैं, और अगर 2 रुपया है तो 1 लीटर पानी देने के लिए हम 60 पैसा दे रहे हैं। तो ये डिपेंडिंग ऑन द, कुछ खेतों में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका बिल आता ही नहीं है, कुछ एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो ये अलग अलग है। तो इसलिए मैं आपको यूनिट बता रहा हूँ कि 1 यूनिट को चलाने के लिए कितना बिजली खपत होगा। वो है 1 लीटर, 1 यूनिट के लिए हमें 3.3 लीटर पानी मिलेगा। उसके बाद जो कार्ट्रिज है, जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है, वो कस्टमाइजेबल है, हम निकाल भी सकते हैं, पूरा का पूरा हटा के साइड में रख भी सकते हैं, कुछ और भी लगा सकते हैं, तो वो मॉड्यूलर सिस्टम है। ओके, तो किसी ने पूछा कि नाम क्या है, तो हाँ, तो नाम है इनका वायुजल टेक्नोलॉजीज। आप गूगल कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं इनको और इन तक पहुंच सकते हैं। और एक सवाल ये था कि क्या ये कुछ हार्मफुल केमिकल्स फिल्टर करती है आपकी मशीन? बट मुझे नहीं लगता रमेश कि हवा में कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स का कुछ है, लेकिन आप प्लीज इस पे बताएं कि कैन इट फिल्टर एक्सेस ऑफ हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम दैट वाटर? नहीं, जो हमारी हवा है, थोड़े स्केल पे हमारी हवा, डिपेंडिंग है हम कहाँ पे है, हवा प्रदूषित होती है। मेरा ये मानना है कि लेह लद्दाख की हवा प्रदूषित नहीं है। तो ये फिल्टर मशीन के अंदर हम एयर फिल्टर यूज करते हैं, तो हम बेसिकली हवा को थोड़ा फिल्टर करते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट की, क्या ये मशीन हार्मफुल कुछ रिलीज करती है क्या, तो इस मशीन के अंदर हम जो रेफ्रिजरेंट गैस करते हैं, दैट इज only chemical which is being used. Other than that, the whole system is a metallic system. कहीं पे सीट मेटल है, कहीं पे कंप्रेसर है, बाकी सब मेटल है।
जो रेफ्रिजरेंट गैस है दैट इज ओनली ए केमिकल विच इज ट्रैवलिंग इन द सिस्टम, और वो बेसिकली हम जो रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट है, और वो एक बार आप मशीन में भर देते हो तो कम से कम 5-7 साल के लिए वो दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं होती है, अनलेस मशीन को कोई डैमेज हो जाता है। तो वो हो सकता है कि 10 साल में एक बार भरना पड़े, बट वो बहुत कम होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, एंड दैट इज ओनली केमिकल। सो मशीन हवा को किसी भी तरीके से प्रदूषित नहीं करती है, हवा का तापमान जरूर बढ़ाती है थोड़ा, बट प्रदूषित नहीं करती है, और हवा को फिल्टर भी करती है, और जो ग्राउंड का पानी होता है हम ये मशीन उसको भी बचाती है। तो अगर हम इस मशीन से 1 लीटर पानी प्रोड्यूस करते हैं तो वो 1 लीटर बचाया पानी कम से कम 5 लीटर ग्राउंड का पानी बचाता है। तो ये मशीन का एक जो वातावरण की तरफ से एक इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव है। रमेश, आपके क्योंकि मेरा भी कंसर्न था और कुछ हमारे पार्टिसिपेंट ने पूछा कि कॉस्ट साइड पे बहुत अभी महंगा है, तो क्या फ्यूचर प्लान्स हैं क्या आपका कि ये कॉस्टिंग कम हो पाए, या किसी तरह की कोई गवर्नमेंट स्कीम से इसको रिलेट करके लोगों को कुछ राहत दे पाए कॉस्ट में? आप कैसे कैसे कुछ प्लान है इसके बारे में? तो ये मेरा ये मानना है कि ये जैसे 10 साल पहले बैटरी व्हीकल्स आते थे, जो एक बाइक आती थी बैटरी व्हीकल्स, वो 2 लाख रुपए का आता था, 2-2.5 लाख रुपए का। आज वही बैटरी व्हीकल लगभग 1 लाख 1.25 लाख में मिलता है। तो 10 लाख में एक 10 साल के अंदर जो चेंज आया है कि बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ आए, तो जो स्केल ऑफ इकोनॉमी होता है वो आ जाता है इसके अंदर। सेकंड, काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो सब्सिडी भी दे रहे हैं, तो कंसिडरिंग, तो मैं आपको ये ईवी का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है ईवी, उनका एग्जांपल है। जो 2 लाख की चीज थी आज कुछ स्टेट्स में 60-70 हजार में बिक रही है। तो हमारा भी सेम है कि वी विल आल्सो फॉलो द सेम ट्रेंड, क्योंकि जो मशीन है बहुत कम मैन्युफैक्चरर्स है, नया टेक्नोलॉजी है, तो स्केल ऑफ इकोनॉमी आएगा। एज more system production goes on, the cost will also be optimized, and with subsidy cost will further come down. So this will follow trend of any new technology. Solar system था 20 साल पहले या 10 साल पहले, इलेक्ट्रिकल व्हीकल था, या आज वायुजल है, तो it will come down at least by 40-50% in coming some years. I cannot say 5 years or 7 years, but in few years it will come down. रमेश, एक और सवाल था, क्योंकि लद्दाख में इतना कंटिन्यूस पावर सप्लाईज नहीं होती हैं, या जैसे आप राजस्थान से आते हैं, मैं भी राजस्थान रहा हूँ काफ़ी, तो बहुत ही इरेटिक पावर सप्लाई होती है, कभी पावर आ रही है कभी नहीं आ रही है। तो क्या इसका कुछ सोलर पावर बेस्ड भी कोई वर्जन है जो कि लद्दाख में ज़्यादा हेल्पफुल हो, क्योंकि वहाँ सन अबंडेंट है, मतलब सनलाइट इज अबंडेंट, तो कुछ ऐसा है आपका कुछ मॉडल इसमें? हम छोटे स्केल पे जो हमारा 35 लीटर पर डे मॉडल है उसको हम कंप्लीटली डीसी बेस्ड बनाने का कोशिश कर रहे हैं। डीसी बेस्ड मतलब कि जो कंपोनेंट्स है वो ही डीसी पावर कंज्यूम कर रहे हैं, बाकी सारे सिस्टम्स में एसी बेस्ड कंपोनेंट्स है। तो अभी हम कुछ पायलट कर रहे हैं जो सोलर पैनल के ऊपर चला रहे हैं, 40 किलोवाट का प्लांट लगा के, 50 किलोवाट का प्लांट लगा के। तो डेफिनेटली बड़े मशीन हैं उनको सोलर पे चला सकते हैं, हमारे मशीन है वो विंड पे भी चला सकते हैं। बेसिकली पानी एनर्जी प्रोड्यूस करके आप एसी पावर सप्लाई कर सकते हो। छोटा जो यूनिट है उसको डीसी पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। लद्दाख बीइंग आई वुड कॉल फ्यूचर पावर सेंटर ऑफ इंडिया, क्योंकि वहाँ पे जो एयर का है, विंड का भी काफी स्कोप है और सोलर का भी काफी स्कोप है। तो पावर सप्लाई का फ्यूचर में इश्यू नहीं होना चाहिए। आज हम मशीन्स को सोलर पे चला सकते हैं। ओके, एक आखिरी सवाल जो मतलब बहुत ज़्यादा आपको हम परेशान नहीं करेंगे, एक आखिरी सवाल है कि आजकल हमें देखने को मिलता है कि टेक्नोलॉजीज को सर्विस बेस्ड मॉडल में हम देख पा रहे हैं कि बहुत सर्विस बेस्ड मॉडल आ जाते हैं। तो कुछ आपका भी ऐसा प्लान है कि आप इस टेक्नोलॉजी को सर्विस मॉडल बेस्ड में दें कुछ टाइम के लिए?
हाँ, वो एक सेकंड बिजनेस एस्पेक्ट है. So we have two business propositions की आप एक जगह सिर्फ मशीन बेच दो, दूसरी जगह आप पानी बेचो. पानी बेचो वाला, मशीन बेचो वाला काफी क्लियर है, आपने मशीन बेच दी है, कंज्यूमर यूज करेगा मशीन को पानी. सेकंड वाला है कि आप मशीन बेच के आप कस्टमर के साथ बोल रहे हो कि आपको 200 लीटर पानी चाहिए, मैं आपको 200 लीटर पानी दूंगा. आई विल यूज योर स्पेस and that's it. I will pay my electricity bill, I will maintain the machine, and I'll give you 200 liters of water every day, 5 rupees per liter. That is a one business model. But today हमारे पास उस business model में क्या होता है कि शुरुआत में पैसा ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि अगर मैं कहीं पे 5 कस्टमर्स को 1000 लीटर पर डे का मशीन देता हूँ, तो मेरे पास 50 लाख रुपए होना चाहिए जो मैं रख पाऊँ, एंड आई कैन एक्सपेक्ट कि दो 50 लाख रुपए मेरे अगले 7-8 साल में वापस आएंगे. सेल करता हूँ तो वो पैसा इमीडिएटली आ जाता है. तो उसके लिए सेकंड बिजनेस मॉडल इट्स ए गुड बिजनेस मॉडल, बट दैट नीड कैपिटल इन्वेस्टमेंट. तो वो आज हमारे पास नहीं है. वंस वी हैव सम कैपिटल वी वुड ट्राई दैट मॉडल. ओके, थैंक यू रमेश. मैंने जैसे पहले भी आपको एक बार रिक्वेस्ट किया था, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा आज यहाँ इस मंच को यूज करके कि आप अपनी टेक्नोलॉजी को, हम चाहेंगे कि आप STIF लद्दाख में कभी डेमोन्स्ट्रेट करें. जब हम एक फिजिकल मीटिंग करें, हम अपने एंटरप्रेन्योर्स को बुलाएं लद्दाख में, या वहाँ के ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को बुलाएं, गवर्नेंस को वहाँ बुलाएं, LHTC को बुलाएं और अदर स्टेक होल्डर फार्मर्स को बुलाएं, और तब आप अपनी टेक्नोलॉजी वहाँ डेमोन्स्ट्रेट करें. और इसके साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप STIF-Ladakh.org पे अपने आप को एज ए मेंटर रजिस्टर करें, ताकि जो हमारे लद्दाख के इनोवेटर्स हमारे पास आए, हम उनको आपसे अलाइन कर पाएँ, ताकि आप उनको गाइड कर पाएँ. जिस तरह से आपने अपने आप को स्टैब्लिश किया है, अपना बिजनेस साइंटिफिक इंटरवेंशंस पे बिल्ड किया है, हम चाहेंगे कि आप और इनोवेटर्स की भी मदद करें. तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ, एंड ऐसे ही आप STIF को सपोर्ट करते रहें. ये रिक्वेस्ट रहेगी हमारी आपसे. इसके साथ मैं थैंक्स करना चाहूँगा इन 2 दिन के सभी स्पीकर्स का, क्योंकि ये अंतिम पड़ाव था हमारे 2 दिन के वर्कशॉप का. मिस्टर रमेश का जो टॉक था वो लास्ट टॉक था हमारा, और इसी के साथ मैं सभी स्पीकर्स को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, हमारे को सपोर्ट किया, और वो आए और उन्होंने अपनी बातें रखी. और मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोगों ने हमें सुना इन 2 दिनों में, हमें काफ़ी अच्छा टर्नअप मिला. हर सेशन में 150-200 लोग हमेशा बने रहे. तो मुझे लगता है कि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाए, हमारे साइंटिस्ट की बात हम पहुंचा पाए अपने पार्टिसिपेंट्स तक. और हमने एग्रीकल्चर को कवर किया, हमने लाइफ स्टॉक को कवर किया. इन 2 दिनों में हमने एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की कोशिश की. हमारे इनॉग्रल सेशन में डॉक्टर सोनम वांगचुक आए, उनका मैं स्पेशल धन्यवाद करूंगा इस मंच से कि उन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमने उनको बुलाया, और वो आए और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन एक टॉक दिया. और उसके बाद सेरिंग ताशी सेतन आए, जो कि चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं लेके, उन्होंने भी ले के बारे में बताया और गवर्नमेंट में क्या पॉलिसीज हैं, कैसे काम कर रही है, बताया. और स्पेशली मैं धन्यवाद करूंगा यहाँ से बिहार और DRDO का, जिनकी फैकल्टी यहाँ आई और उन्होंने अपनी बातें रही और इंटरवेंशंस बताए उन्होंने. और IIT रोपर को भी मैं धन्यवाद करूंगा. डॉक्टर रीत कमल तिवारी आए और उन्होंने अपनी बात रखी एग्रीकल्चर पे. फिर हमारे पास मिस्टर जुबैर अहमद आए लद्दाख से, जिन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बात की. डॉक्टर मोहम्मद दीन जो लेहो के एक NGO के CEO हैं, उन्होंने अपनी बात रखी और अपने एफर्ट्स को बताया. और जो हम काफ़ी इनोवेटर्स हमारे साथ जुड़े, काफ़ी स्टार्टअप्स हमारे साथ जुड़े इन 2 दिनों में, उन्होंने सबने अपना टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन किया और बताया कि कैसे उन्होंने अपनी जर्नी को एक्सप्लेन किया, अपनी जर्नी को सामने रखा कि कैसे साइंटिफिक इंटरवेंशन से उन्होंने
प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया है, चाहे वो स्टेल एप्स हो, चाहे वो यूवी ड्रोन के लिए मिसिंग मोहित नाम बता पाएंगे, PS1925 जो है, जो उन्होंने अपनी बात रखी। आज हमारे साथ श्री शंकर जुड़े, आज हमारे साथ स्कॉस से काफी स्पीकर जुड़े, डॉक्टर अंकर रस्तोगी, डॉक्टर नीलेश शर्मा, और केवीके से जुड़े डॉक्टर फिरोजुद्दीन शेख, और स्कॉस से जुड़े डॉक्टर जेगमित यानचंग, 2 स्टार्टअप जुड़े, लॉब्जन वंगटैंक और रिग्जिन नॉर्बू वाले, और स्कॉस के एक और फैकल्टी जुड़े डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर श्री शंकर जुड़े ब्रेन वायर्ड से, जिन्होंने IoT और मशीन लर्निंग के थ्रू बताया कि कैसे लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट कर सकते हैं। अपर्णा दिवाकर जुड़ी स्टेल ऐप से। तो हमारा प्रयास रहा इन 2 दिनों में कि हम पहले फैकल्टी R&D फैकल्टीज को आपसे मिलवाएं, और उसके बाद हम इनोवेटर्स से मिलवाएं, ताकि हम 2 चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट कर पाएं कि कैसे फंडामेंटल साइंस लैब में काम करती है और कैसे इनोवेटर्स उस फंडामेंटल साइंस को उठा के ग्राउंड पे अपनी टेक्नोलॉजी बनाते हैं और डिप्लॉय करते हैं। तो इस सभी के साथ मैं थैंक्स करूंगा हमारे डायरेक्टर CSIR-IMTECH चंडीगढ़ का, टीम नाइलेट का, और टीम PGI-MER चंडीगढ़ का, डॉक्टर प्रोफेसर मीनू सिंह, डॉक्टर अमित कुमार, मिस अनुप्रिया, डॉक्टर कुंजस डोलमा, मिस्टर फुनसुक टोल्डन, डॉक्टर बलविंदर सिंह, Mr. Mohit Singhal, and Mr. Sandeep Kumar. So with that, I formally announce the closing of this workshop, and thank you very much. मैं 2 मिनट के लिए सबके माइक्स ऑन कर सकता हूं, अगर कोई अपनी बात रखना चाहे तो आपके लिए ये मंच खुला है। हमें सुनने वालों में से कोई भी अपना माइक ऑन करके अपनी बात रख सकता है अगर कुछ कहना चाहे, अदरवाइज हम क्लोज करते हैं। Hello. हाँ बोलिए। Myself Dr. Putan Singh from IVRI Ijjarnagar. It is actually indeed a very successful workshop I have seen, where you have made the arrangement for lectures of the different departments, research institution, and also for startups and new actually providers. Here I would like to actually say a few actually words that the feed fodder problem is especially in hilly areas everywhere. In one side, the shortage of feed and fodder is there. Another side, we are burning the actually crop residues. So there is actually very good scope that in Punjab and Haryana, we are actually burning crop residue, paddy straws. So these can be actually prepared as a wholesome compressed complete feed block for livestock, and they can be transported to different locations, and the cost of transportation is will be very low. So such thing actually your actually organization can do, even government can do, even Ladakh government can actually can use the infrastructure for transporting and preparing these feed blocks. And rest is okay. Nice actually workshop. Congratulations to you, Shekhar. Thank you, Dr. Singh, for the encouraging words coming all through from Bareilly, I believe. Thank you very much, sir. Anyone else, anybody want to say something, can just unmute themselves and say. I can see few faculty members from CSIR also joined us, so if they want to say something. And also we are open for any type of collaboration at STA Hub. We request you all to visit our website, and if you are a student, if you want to make a change in Ladakh, please register with us. We will provide you a state of the art fabrication lab where you can come and work on your ideas
on diagnostics or agri-tech or health tech, we are very much open to serve you. And also I request all the dignitaries, scientists, academicians who joined us, please register yourself as mentors on our website so that we can, build an environment for Ladakh, the population of Ladakh to, dream about making changes and, make them see, see this happening. So I want you to, I want your support in all those, operations of STI Hubble. So if no more, if nobody have to say anything, I announce the formal closure of this workshop. Yeah, Mohit. Hello. 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 हेलो सर। या बोलिए सुन पा रहे हैं, बोलिए। सर मैं प्रीति हूँ, बिहार से, बक्सर से। जी मैडम। सर थैंक यू बोलना था सबको। मैं एग्रीकल्चर पे आर्टिकल लिख रही हूँ और बहुत आइडिया मिला और सुन के बहुत अच्छा लगा, इसलिए थैंक यू सो मच सबको। थैंक यू प्रीति जी। आगे भी हम ऐसे ही वर्कशॉप करते रहेंगे, आप लोग जुड़े हमसे, यही मोटिवेशन होता है। आपको मैं बताऊं, जब वेबिनार हम करते हैं यही मोटिवेशन होता है कि लोग उसमें जुड़े हैं, लोग उसको सुने, लोग रजिस्टर करें, यही मोटिवेशन। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहे, यही मोटिवेशन था स्पीकर्स के लिए, यही मोटिवेशन था ऑर्गेनाइजर्स के लिए। ओके सर, थैंक यू सर। अगर एक बार के लिए जितने लोग जुड़े हुए हैं अभी अपना कैमरा ऑन कर ले तो हम एक जॉइंट फोटोग्राफ ले सकते हैं। अगर Chandrasekhar ji, can you hear me? Yes sir, I can hear you, sir. Yeah, this is Dr. Nasir from CSIR-IIM Jammu. Yes sir. Yeah, I was for most of the time, for 2 days, I was online and hearing all the lectures and presentations. It was really a wonderful start by CSR. You guys at Chandigarh are doing a wonderful work. Like all the lectures, all the presentations, they were really very nice. So what I expect next time, maybe we can have another session, which will be basically, it should resort to the main issues of the Leh Ladakh, like solid waste management is one issue. Then, development of this sea buckthorn, value addition of sea buckthorn fruit, or sea buckthorn design and development of harvester. Then the third issue, which I believe in Leh Ladakh, is like watershed management. This is also one of the main issues there. Then the fourth will be like drying and cold storage of the horticulture products. So I think we also need, to focus on the basic main, things which can revive the economy of Leh Ladakh, I guess. Thank you very much, sir. We have taken your points and definitely will have next workshop on these issues. I believe we can see towards IIIM for experts on these topics, so we can have some lectures over these topics. I believe we can look towards IIIM. शेखर सर बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ शेखर, for this drying and cold storage, solar systems are nowadays available, and IIT Kanpur is having. So you can also involve the IIT Kanpur. For renewable energy, they are having for wind and solar dryer and solar cold storage for the farmers. Because that will be very useful, because Leh Ladakh is receiving the largest solar radiation all over India. So the scope of solar thermal is enormous in Leh. Yes. So IIT Kanpur, I am having a number, I can share Shekhar. Okay. Thank you, sir. I will ask you, I'll drop your mail. I have your email ID, so I'll ask the contact details of IIT. Okay. Thank you. Thank you, Dr. Nasir. Thank you, Dr. Singh. If there are any more solutions we can discuss, or we can close for today, and with a promise to meet again with another sessions or other webinar with experts from IIIM, IHBT, or
KVK or Kargil, SCOST. We'll be trying our best to get the best experts in the domain. ठीक है, with that, धन्यवाद, salam, namaskar, Julie. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Namaskar, all of you. Thank you. I love you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Namaste. Thank you. Namaskar.